Good. Waiting for spotlight. Co-host कर दीजिए. Okay, sure. So now recording is on. I'm on a spotlight. I feel everybody able to see me. Yes, no. That reminds me, मेरा यही चल रहा है. कैमरा बंद है. Yes, sir. Thank you, Pete. Sure. So let us try to understand what are we talking about, how we are going to work. So in today's lecture, we'll be talking about data structure as a complete part. What exactly is data structure? हम लोग कैसे बात करेंगे? क्यों बात करेंगे? Let us try to work with. Now, this is a very important part of your Python because अगर आप बात करो interview rounds का, there will be a lot of questions coming on this. So people be prepared for this. Be ready with this. आपको इसे अच्छे से समझना होगा. There are small stuff of data structures which you really should know in and out. तो interview अच्छा जाएगा. So make it a point that you get it clearly. So when you say data structure, now if we belong to comms IT line, obviously ये topic, ये subject तुमने किया है और कितने अच्छे से करते हो ये मुझे भी मालूम है because I have been handling data structure for over years now. So data structure में जैसे ही मैं पूछता ना, what is data structure? Stack, queue, linked list, tree and graph, hash table, array. खत्म. People fail in understanding the question was not the example of data structure. The question was, what do you mean by data structure? What is data structure? So data is an info. Structure is a way to store and access. That's data structure technically. So मतलब आप बोल रहे हो data structure is a collection of information and the way we store and access it. Yes, ये याद रखना. If anybody asks you anywhere, what do you mean by data structure? Do not answer stack, queue, link. These are the examples. These are types you can say. So what do you mean by data structure is the way certain information is saved, processed, and used. That is what you mean by data structure. That is what you mean by data structure. So if that's a data structure, why are we learning and why it is so important? Because all info needs to be maintained. In some special way, some needed special. वहां पे डेटा स्ट्रक्चर तुम लोग को सामने लाना पड़ेगा, आएगा. तो अब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. पाइथन के पास बिल्ट-इन है. पाइथन has built list, tuple, everything in a locus, remember. Then there is a set and there is a dictionary. चार data structures है Python के built-in. चार data structures Python के built-in. There are four data structures of Python which are built-in. Is tuple, set and dictionary to work into. हर एक का अपना advantage है, हर एक का अपना part है. First thing, most important thing, one has to remember. Python में all data structure are made by symbols. Sir. Solid बोला, मतलब बोलो. You will not create a list by writing a list. You will not create a tuple by writing a tuple. You will not create a dictionary by writing a dictionary. So, sir, ठीक है ना, सुबह. You will not create a list by writing a list. ऐसे कैसे? Python. Square bracket डालो, list बनेगा. Round डालो, tuple. With some data in it, set बनेगा. Dictionary, key, colon, value format में कुछ डालो, तो dictionary बन जाएगा. यानी कि हर एक चीज का एक format है और वो format या वो बनाने के लिए we are definitely not going to use their identifiers, but we'll be using symbolic names, or rather I would say more than symbolic names, the basic format or the symbols which we are putting up over here. So be very, very careful. The first thing, make a note. All data structures are made with symbols. All data structures are made with symbols. All data structures are made with symbols. We do not use their identifiers, but we would be using their formats. So be very, very careful. एक पहला change.
apart from that, जब आप बात करते हो, there are certain properties जो सब में, there are certain properties जो किसमें नहीं है, कुछ खास है तो जरा देखते जाते हैं. So let me put this, let me complete this. फिर कॉपी करना. We're putting properties, talking about list, talking about tuple, talking about set, talking about the ICT dictionary. अब एक प्रॉपर्टी जो सब में है and which is the strength of Python, technically we are talking about a property called heterogeneous support. What do you mean by heterogeneous support? Now be very, very careful. Be very, very careful. Heterogeneous support means ability to store multiple type of data. Array, जितना हम लोग ने किया है C, Java या किसी में भी, हम लोग कहते हैं array is a collection of similar data type. Congrats, बराबर बोला. So now we are saying collection of this similar data type, यानी different data type, is always going to be a data structure. So list, tuple, set, dictionary, ये सब कुछ heterogeneous है. तो एक property जो common है सब में, heterogeneous है. They are heterogeneous in nature. मतलब sir, int, float, boolean, string, complex number ये सब डाल सकते हो. सब भी डाल सकते हो, इसमें से कुछ एक भी डाल सकते हो, ये आप पे है. तुम जैसा डेटा दोगे, मैं वैसा डेटा स्टोर करूंगा. सो द लॉजिक बिहाइंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल. तुम जैसे जैसे डेटा डालना शुरू करोगे, मैं वैसे वैसे डेटा एक्सेप्ट करना. सो इट्स हेट्रोजेनस. हेट्रोजेनिटी भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू फ्यू बुक्स. Remember, it's the ability of a data structure to store different type of data. So this is the ability. That's first thing which we talk about. So now, how we work with, how we operate with people. Second thing, डायनामिक. डायनामिक मतलब जितना डेटा उसमें डालोगे बड़ा होगा, जितना डेटा रिमूव करोगे वो छोटा होता जाएगा. ओके, डायनामिक डायनामिक डायनामिक. टपल इज नॉट डायनामिक. यानी कि सर लिस्ट बड़ा छोटा हो सकता है, सेट बड़ा छोटा हो सकता है, डिक्शनरी बड़ा छोटा हो सकता है, बट मेरे दोस्त टपल कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज वंस क्रिएटेड. टपल एक ही बार बनेगा और बनने के बाद ना उसमें डेटा आप ऐड कर सकते हो, ना उससे डेटा रिमूव कर सकते हो. सो टपल हैज अ ग्रेट लिमिटेशन. ओके, सो दैट्स अ डायनामिसिटी. अच्छा, देन ओके, duplicates. Is the duplicate allowed? List allows it, tuple allows it, dictionary allows it. Set बोलते ना, ये हमसे ना हो पाई नहीं. Since we work with the set theory, guys, we do understand the concept. Set theory का मतलब क्या होता है? Collection of data, उसमें duplicates नहीं होता. If you remember anything related to set theory, one thing was sure: set doesn't have a duplicate. Congrats. That's the exact property which we are even saying now. So set में duplicate नहीं होता. Be very very careful when you go. ठीक है, duplicates नहीं मिलेंगे. Okay. Then data stored in order of. अब जरा संभल के जरा रुक जाओ. लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर फॉलो किया जाता है. इंसर्शन ऑर्डर फॉलो किया जाता है. टपल अगेन इंसर्शन ऑर्डर गेट्स फॉलो. सेट कस्टम ऑर्डर. कस्टम ऑर्डर ये ना तुम्हारे हिसाब से चलेगा ना तुम्हारे हिसाब से कुछ लगेगा खड्डे में. मेरे पास खुद का ऑर्डर है. कस्टम ऑर्डर. डिक्शनरी की ऑर्डर मतलब की जो होगा तुम्हारे पास उस हिसाब से डेटा को अरेंज किया जाएगा. सर इंसर्शन अरे इंसर्शन का ऑर्डर कैसा रहता है? ओके, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है. तो द वे वी इंसर्ट ए बी सी डी, दे बिकम 0 1 2 and 3. क्लियर? यस सर.
I love this guy. No, अच्छा है, but be this way throughout life. नहीं समझा ना तो पूछ दो, उतना आगे जाएगा. Good job. So इंडेक्स का फंडा क्या है? इंडेक्सिंग यानी कि क्या मैं एरे की तरह a ऑफ 0 बोल के 0 एक्सेस कर सकता हूँ, a ऑफ 1 बोल के 1 एक्सेस कर सकता हूँ, लिस्ट कर सकते हो, टपल कर सकते हो, सेट नहीं कर सकते. इसमें तुम्हारा इंडेक्स इज द की इटसेल्फ. इंडेक्स इज द की इटसेल्फ. ये नो कहीं लिख के रखना या इंटरव्यू जाने से पहले एक बार देख के जाना, तो इस पे गूगली घुमाया जाता है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और ये अगर तुम लोग को समझना है रियल बुक या नोट्स में, भाई तुम लोग के करीबन 5-6 पेजेस पढ़ने के बाद ये सामने आता है. बेटर ऑप्शन पहले ही लिख लो, याद रखो, बिकॉज आगे जाके इसका बहुत यूज है. योर डिसीजंस ऑफ व्हाट टू एंड हाउ टू वुड डिपेंड ऑन दिस ग्राफ और रादर दिस चार्ट. क्विक ले लीजिए जैसे मैंने प्रॉमिस किया था. टुवर्ड्स द एंडिंग आई विल गिव यू 2 minutes फॉर दिस. 2 minutes गिवन, जल्दी. Be quick, be quick. Sir, Yeah. what is meant by custom order? What do you mean by custom? पहले English बोल. Sir, I don't know. That's why I asked custom. भाई देख, मेरे साइज के लोग होते हैं ना, उनको रेडीमेड कपड़े नहीं मिलते, उनको टेलर से जाके सिलवाने पड़ते हैं. उसको कस्टम फिट बोलते हैं. तो Yes, कस्टम sir. यानी खुद के हिसाब से. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Okay. So going further. Just repeat it. Okay, so as we are talking, custom order is something which you cannot decide, I cannot decide. I remember मेरे साथ ये हो चुका है. You know, my dad went and was asking one of the दादर वाला shop, अरे तुम्हारे पास बड़ा शर्ट है क्या, ये है क्या? तो he was saying some 48 का शर्ट. For him it was the biggest according to him in market. अरे इतना, तो मेरे डैड बोलते थे. Till the time I never entered, so my mom has given me the story. तो लाइक अरे मेरा बेटा इसको नहीं आया, बोले अरे साहब कुछ भी क्या, इतना बड़ा है. एंड देन apparently अभी तो ठीक है, मैं थोड़ा श्रिंक हो गया हूँ. एट दैट टाइम आई वाज 194 kg. तो अदनान सामी और मैं स्टेट कंपटीशन में थे. तो आई एंटर. इनको तो नहीं होगा. मेरा डैड बोलते मैं क्या बोल रहा था. तो आई हैड टू फाइनली गो फॉर कस्टम सूट एंड ऑल. वो अभी भी मैंने रखा है. आई एक्सपेक्ट मेरी बहन के बच्चे उसमें घर घर खेलेंगे. काफी बड़ा है वो, काम हो जाएगा. तो कस्टम ऑर्डर इज एनीथिंग वेयर आई कैन नॉट इंडेक्स इट. डेटा जो अंदर जाएगा वो किस ऑर्डर में रहेगा ये मैं नहीं बोल सकता, वो मेरा स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा. और ये एक्चुअल में होता है सेट में. जैसे जैसे आप इंसर्ट करोगे तुम देखोगे कि खुद ब खुद नंबर्स आगे पीछे हो रहे हैं, विच वी आर नॉट इन कंट्रोल. Hence we say custom order. जहां पे भी हम लोग को नहीं समझ में आता, that's a custom order. That's how we work with. Clear? Yes, Okay. sir. So this is what we have as a data structure. So अगर कोई तुम लोग को पूछे, मेहरबानी करके there are 4 data structure. बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस में मैंने देखा है, इवन जो यूडेमी का हम लोग का गैंग है. आई रिमेम्बर मैंने फोन करके बोला था रिचर्ड को, भाई मेरे बाप, उसने डेटा स्ट्रक्चर में जोश में, नो हिज कोर्स इज प्रीटी पॉपुलर ऑन यूडेमी. सो since I'm also creating multiple courses, so we get in touch. He started data structures are list, set, dictionary, tuple and string. Mind you, string bola atkoge, string is not a data structure. String is one of the primitive data type. फंसोगे, याद रखना. डे 1 पे जब मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप का लिस्ट दिया था उसमें स्ट्रिंग है, str. सो संभाल के, स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है. ये इंटरव्यू में हम लोग गूगली क्वेश्चन पूछते हैं, इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप.
Yes. Is this string data structure? No. याद रखना ये. Okay. So now as we are working with, as we are operating with, एक simple सा फंडा है या data structure तो धीरे धीरे चलो समझा. सर हम लोग को तो अलग ही data structure मालूम. List, set, tuple, ये तो वो types we create them and other things around. So be careful. So अब एक एक के पीछे पढ़ते हैं. Now let us start to and understand one thing at a time. List is what I'll be more interested in. क्यों सर? सबसे ज्यादा अगर यूजर आप मैं यूज करेंगे तो लिस्ट है. सबसे ज्यादा अगर पाइथन यूज करेगा तो वो टपल है. So when I go in detail for list and tuple, I would make you write the reason why tuple is considered more by Python than the other data structure. तो तभी वो याद रखना. Currently, let's talk about list. लिस्ट बनाने के लिए भैया स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं. यानी कि कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है अमर कि अगर मुझे लिस्ट बनाना है तो मैं वेरिएबल इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूंगा तो एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा. ओके शांति से सुनो. सो वेरिएबल इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी लिस्ट डन. सर अगर मुझे डेटा लेना है तो चल यू आर फ्री टू. यू कैन से a is equal to 10 3.14. let's say अमर ट्रू. मतलब सर आप प्रूव क्या कर रहे हो? विविधता में एकता ऐसे इंडिया के बारे में बोला जाता है. So the logic is the first one is int, the second one is float, the third one is string, the fourth one is boolean. So the point I'm saying जो encache कर रहा हूँ वो heterogeneity. Yes, it is heterogeneous to see in nature. Similarly, when you talk about, we follow something which we call as indexing and something called as a negative indexing. सर एक मिनट. इंडेक्सिंग समझ में आता है सर. एरे किया है मैंने जावा में. वेरी गुड. 0 1 2 3 सर ये आता है बस क्या. दैट्स द इंडेक्सिंग. सो तो नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा? पीपल वॉच इट केयरफुली. नेगेटिव इंडेक्स गोज इन अ रिवर्स ऑर्डर बट टेकन एज -1 -2 -3 and -4. तो संभल के ये उल्टा जाता है मेरे दोस्त. So we have two indexing as far as Python is concerned. We have a positive index and a negative index. ये string में भी चलता है और ये list में भी चलता है. Be very very careful. So indexing goes start to end as we put it. तो 0 से n चलता है और 0 से n-1 चलता है. जबकि नेगेटिव इंडेक्स अगर आप बात करो, it works from -1 to -n. This is negative index. Positive negative दो तरह के इंडेक्स है मेरे दोस्त. Okay. So going one step further. Okay. Clear? Now let's consider this way. If I create a list with 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. It's like giving you a pizza, the entire pizza. पूरा पिज्जा खा सकते हो? आंसर इज हाँ सर. आई मीन होंगे आप में से कुछ लोग जिनका कैपेसिटी उतना एक जमाने में मेरा भी था. सो फाइन, बट डू यू हैव द एंटायर पिज्जा इन अ सिंगल शॉट जैसे पानी पूरी खाते हैं? आई डोंट थिंक सो. आई कुड सी लॉट ऑफ हेड लाइक आउट ऑफ क्वेश्चन सर. सो ऑब्वियस है हम लोग सर एक स्लाइस लेते हैं वो खाते हैं एंड देन वी रिपीट द प्रोसेस अगेन एंड इवन अ 12 inch is over. The phenomena is slice which we can use. Slice क्या करता है? Slice में आप start दो, slice में आप end दो, slice में आप step दो. When you give all three things, you can actually decide which amount you want to work. Now there are default values also. Be careful. Default value comes into picture when you don't give a value. इसका 0 होता है. Length
ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है और स्टेप बाय डिफॉल्ट +1 का हो। दैट कम्स अ वन क्वेश्चन, सर ये कौन है? नया है कोई? तो भाई नया है वह, ये याद रखना, LEN, then gives you number of elements। वैसे तो तुम्हारे पास मिन भी है जो मिनिमम रिटर्न करता है, मैक्स भी है जो मैक्सिमम रिटर्न करता है, सम भी है जो सम रिटर्न करता है, एंड सॉर्टेड है जो टेम्पररीली सॉर्ट करके रिटर्न करता है। खैर इनके बारे में आगे जाके बात होगी भविष्य काल में, बट करेंटली कम बैक टू दिस स्टार्ट एंड स्किप। सर ठीक है, वन मोर थिंग प्रिसाइसली लिख के रखो अपने प्यारे से लैंग्वेज में, जो एंड दोगे इट स्टॉप्स एट एंड, सो start to end -1 consider। समझ गए क्या है? फॉर लूप याद करो, मैं 1,4,1 दूंगा तो कहां पे अटकेगा? 3 पे। परफेक्ट अनुष्का, good। So the logic remains as simple as we operate। I love few people over here, they actually speak along with me। There are multiple people जिनको मुझे विंडो में दिखता है, मजा आता है, उन लोग भी बात कर रहे हैं, भले बेचारे म्यूट पे, but yes they are able to understand, speak and work with। So this is what we are talking about। So slicing का use क्या? Pretty important। If you talk about the list का अभी तक हम लोग ने जो ऑपरेट किया है, we have operated list of 2.8 lakhs data in a single list। जब हम लोग इतने बड़े डेटा का बात करते हैं, डू यू थिंक यू आर गोना कंज्यूम इन अ सिंगल शॉट? ऑब्वियस है नहीं, कभी ऐसे नहीं होगा। तो आई विल बी टेकिंग अ पार्ट ऑफ द लिस्ट। पार्ट ऑफ द लिस्ट इज ऑलवेज टेकन यूजिंग द स्लाइस। ओके, जस्ट फॉर माय रेफरेंस, जस्ट फॉर माय क्वेरी गाइस, इफ आई से A:3 पर का लिस्ट है, आउटपुट क्या आएगा? कोई आंसर देगा नहीं, टाइप करके भेजो। इफ आई से A:5 क्या आएगा? If I say A2:5 क्या आएगा? And if I say A:2 क्या आएगा? 4 questions solve करो, टाइप करके भेजो। Considering list is what I have। कोई टाइप करेगा in terms of answer, यही प्रोसेस करके रन करके मत भेजो कि अरे यहाँ से लिखा ही आ रहा है, मुझे आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे ये सोच दिखाना है तुमको कि तुम क्या सोच सकते हो। Slow। Meanwhile, I'll be creating a collab for the day। Okay, firing in your Zoom। क्या बात है? Good to see people are able to do। By the way, links बीच में मैंने फायर किया है, ले लो कोलैब का लिंक। Okay। See? Okay, so let us go with this, let us try to understand now। People with me on a collab link, सर जैसा है वैसे, हाँ
a is equal to let's consider square bracket, पहले वो भी एक दिखा देता हूँ, मतलब सर स्क्वायर ब्रैकेट करने से उसको समझ में आ जाएगा, तुम मुंह खोलते हो ना उस पे से मालूम पड़ जाएगा हाउ मच एजुकेटेड, हाउ मच एथिकल एंड विच रीजन ऑफ इंडिया यू बिलोंग टू। सिमिलरली ये सिंबल से ये सारी चीजें फाइंड आउट कर लेगा, ये सिंबल से सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग पे लेके आएगा। सो एज वी गो विथ, एज वी ऑपरेट विथ, we are giving a रह गया, that explains why error। सर लिस्ट है, अच्छा यही चीज अगर टपल, अब ये खास एक गड़बड़ है, ऐसा करने पे 90% इंटरव्यूज में तुम लोग फेल होते हो। सर सेट ना, ये बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी बनाता है, इसलिए सेट का डिजाइन करते वक्त याद है मैंने एक नल डाला था बीच में, बिकॉज एक कोई डेटा दो, एक भी डेटा दो तो सेट बना देगा। तो दिस इज मोर इन डिटेल व्हेन वी वर्क विद, बट अभी के लिए दोस्त प्यार से एक चीज लिखो, इफ a of empty curly braces given it doesn't create a set, it creates a dictionary। लिख के रखो, ये इंटरव्यू में आते ही है ये क्वेश्चन, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। Okay. Sir, Yeah. can you Tell repeat? me. Sorry. Can you repeat? Okay. See, when you write this way, it will not create a dictionary. It will not create a set. This is by default dictionary. याद रखना। तो ये डिक्शनरी बनाता है, देख ले, दोनों मैं समझाता हूँ दोस्त। बट अगर तुझे सेट बनाना है तो तुझे एटलीस्ट कोई एक डेटा तो देना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं तो इंस्टेड ऑफ डिक्शनरी, अगर मैं ऐसे लिखूं तो मेरे दोस्त ये सेट बना देगा। तो सेट में एक डेटा तो देना पड़ता है, सेट में एक डेटा तो देना पड़ता है। और एल्स एज वी वर्क विद सेट, अगर कोई बोले, दिस इज अ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग जियो और टेक महिंद्रा, उनमें पता नहीं ये उन लोग का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, हाउ वुड यू क्रिएट एम्प्टी सेट। नाउ पीपल फेल इन अंडरस्टैंडिंग बिकॉज सब्जेक्ट ने सीखा हुआ है, इतना ही आता है, तभी सिर्फ तुम ऐसे कर सकते हो। सर ऐसा मतलब एम्प्टी सेट बनाने के लिए उसका मेथड यूज करो, तो ये भी लिख के रखो, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ नल सेट, एम्प्टी सेट, वन कैन यूज सेट ब्रैकेट। ये मेथड है सेट का। टेक्निकली हम लोग जबरदस्ती एक सेट बना रहे हैं, टेक्निकली हम लोग जबरदस्ती एक सेट बना रहे हैं। So make it a point that you realize that, make it a point that you get that. Clear? People clear with this? दोस्त clear? समझा? Yes, sir. Perfect. चलो, let's put it next level. अब भैया हम लोग ने जो बात की थी उसका बात कर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो नंबर्स है 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. This is what we have as such. So this is what we would be working with. I don't need a text. ये होता है जल्दी में, delete. So if I ask A, it is very simply given to me. Yes sir, पूरा है। अच्छा, if I say A of 5, क्या आएगा? Anybody? A of 5 क्या आएगा? 60, sir. 60. Very well. तो A of -5 क्या आएगा? 30. Perfect. Lovely people. Thank you very much. So अब जब मैं बात करूंगा, इसका इनडायरेक्ट मतलब है A0:5. ओके, बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यू लिया तो 0 से 5 तक जो भी है मिलेगा, दैट इज 10, 20, 30, 40, 50। सर एक बात बोलो, 0, 1, 2, 3, 4, वही तो मैं चिल्ला रहा हूँ, 5 पे रुकेगा तो 60 will not be part of it. 60 will not be part of it. So be very very careful when you play with this. वापस बात करते हैं, let's pull it down and let's go to A again. अब अगर बात किया जाए आगे के एग्जांपल्स का, A of 5 भी अगर डाला है मैंने, तो सर 5 से चालू होगा, तो 5th one is 60 से एंड तक जाएगा, 60, 70।
अब ट्रिक होता है जब कोई बोले तुमको कुछ इस तरह से, 2 से चालू तो होगा पर 5 पे रुकेगा, 2 से चालू होगा पर 5 पे रुकेगा। सर 5 पे रुकेगा, 6 5 तक चलेगा, it will better say that way, it will run till 5 and then on 6 it will definitely stop. That's how we work with, that's how we operate with the story. Then we go further. अगर मैं कहूँ यार अमर कोलन कोलन सिर्फ 2 देता है तो ये अल्टरनेट उठाएगा, 10 लेगा 20 छोड़ देगा, 30 लेगा 40 छोड़ देगा, 50 लेगा 60 छोड़ देगा, 70. That is how you work with, that is how we operate. Now one thing I would like people to write it precisely using a single line. Can you reverse a list? ये लिख के रखो, ये एक स्पेशल कमांड है, ये एक झटके में तुम्हारे लिस्ट को उल्टा कर देगा, बट उसके नीचे एक पैरा सा वर्ड और लिख के रखो, it temporarily reverses the string. check it out. ए पे फर्क नहीं पड़ा, temporarily उसने उल्टा करके दिया, temporarily it has given you reversing the thing, but मेरे दोस्त बाकी कोई चेंज परमानेंट नहीं की, so make it a point that you get that. People clear with this? People clearly getting it? वापस मैं ये दे कोलैब के लिंक्स में शेयर कर चुका हूँ भाई, होपफुली पीपल हैज अ कोलैब लिंक एज सच. सो अभी तक तो हम लोग ने इसका ही बात किया. नाउ देयर इज अ फ्रेज व्हिच आई लव टू रीड बिकॉज़ पीपल हार्डली अंडरस्टैंड इट. सपोर्ट्स वन ऑटो इटरेशन and second it supports something which we call as index iteration. यार ये auto iteration and index iteration क्या होता है? Okay, so when you tend to work with this, when you tend to operate with this, let us try to work, let us try to operate on this. Logic बहुत simple सा है, फंडा बहुत simple सा है. हम लोग अगर बात करते हैं ऑटो इटरेशन, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ उसे कनेक्ट कर दूंगा फॉर लूप से. ये इंटरेस्टिंग चीज है. आइटम इन ए प्रिंट आइटम. ओके, दिस इज सर ऑटो इटरेशन. ये कर सकता है, ये खुद ब खुद आइटम वुड बी 10 20 30 40 50 60 70. दिस इज ऑटो इटरेशन. इंडेक्स इटरेशन अगर चाहिए तो थोड़ा अलग आएगा. For I और index in, अब index in range में मेरा तरीका अलग हो जाएगा. len of a. So now we'll say print at index we have a of index. So if I play this, the output obviously changes, we are aware of it. But now looking at the screen, can people tell me what's the difference between auto iteration and index iteration? Still We waiting. are also getting the index also from 0 to. Anything other than that? Position of numbers. It prints number of elements also. तो दूसरे में भी तो वही था. Iterate over item. Items in this. इसमें iterate only on index and items are accessed via index. If you realize कोलैब में मैंने क्या लिखा है, ऑफिशियली आइटम लिखा है, जान पूछ के लिखा है वो. I could have made it I could have made it X, I could have made it any damn thing. But why do you think मैंने precisely आइटम लिखा? सर कुछ हुआ लेकिन ज्यादा समझा नहीं. ओके, मेक इट दिस वे गाइस. अगर मैं लिख रहा हूँ, यह है ना आपके पास, चल एक मिनट.
So if we are talking about this list and all data science, data analytics, visualization, machine learning, सबसे ज़्यादा use होता है. Be careful. So when you tend to talk about this, people, मैंने क्या लिखा था? For I in a print I. तो मेरे दोस्त I ये होता, मतलब I एक आइटम, अपना धर्मेंद्र स्टाइल में चुन चुन के एक आइटम पे जाता. It would have taken one item at a time and moved ahead with that. Okay. So in the other way of working, for index का जब मैं बात कर रहा हूँ, in range of land of working with a नीचे, okay, print we would say at index. Short में थोड़ा कम लिख रहा हूँ, index. तो here we are banking on index. तो ये तो तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 6 है, वो इंडेक्स होता, वो इंडेक्स. ये एक बड़ा डिफरेंस है. Unseen, unspoken is the fact that indexing would be only possible for those who provide indexing feature. जैसे कि list and tuple, set और dictionary में ये fail हो जाएगा. क्यों? If you remember वो ग्राफ बनाया जो हम लोग ने, चार्ट बनाया, if you remember custom order का जो क्वेश्चन था, custom यार मेरे को मालूम ही नहीं है उसका इंडेक्स क्या है, मैं एक्सेस क्या करेगा? So probably this is what happens कि भाई I don't know the index. How would you know index? Because this is following custom order, so you will not be able to access. अच्छा, dictionary sir, dictionary में index है किधर? Dictionary में तो key order है, तो again it will fail. But things like this would still support auto indexing feature. मतलब auto iteration वो support कर लेगा. क्यों? तेरे को इंडेक्स लेना देना नहीं है ना, मैं एक एलिमेंट दे सकता है तेरे को, यू डोंट गेट इनटू कि कहां पे है, मैं लाके दे रहा है ना बस है. तो दैट इज अ रीजन वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस. बट कुछ जगहों पे हम लोग को इंडेक्सिंग बेस्ड काम करना पड़ता है, वहां पे ये वापस सामने लाना ही पड़ेगा तुम्हें. Everybody clear with this? Any doubt? Anything up till now? Waiting. People clear? Give me thumbs up. चलो, lovely. ठीक है, यानी यहां तक तो सर मतलब डन लिस्ट, वी आर नॉट इवन स्टार्टेड. अभी तक तो सिर्फ मैंने लिस्ट क्या है उसका बात किया है, लिस्ट क्या कर सकता है उसका बात किया है. तो ठीक है. नाउ वन ऑफ द क्वेश्चन विद लिस्ट इज व्हाट आई लव टू सी. ये बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने देखा है. सो उसके बाद जब भी मैं लिस्ट सिखाता हूँ ना, तभी खींच के लेके आता हूँ कि भाई ये एक क्वेश्चन एटलीस्ट करके दो मुझे. The list consists this, people. The list consists is this. Now that can change, but जो क्वेश्चन इन लोग पूछते हैं उसमें कुछ इस तरह से डेटा होता है. What you are supposed to print is 11, 11, 22. जो समझदार है वो समझ गए होंगे क्या करना. Till 11, 22 to 66. मैं खुद बोलता हूँ, स्लाइस यूज करो. Give you 5 minutes at most for this. I want you guys to work on this. 5 minutes timer, वरना मैं हूं ना. Meanwhile, I'll get my water, what I feel.
Okay. Okay, line number 16. Let me check. Okay, this is जिनको स्लाइसिंग नहीं समझा एक समझो, ये स्टेप है ना, तो ओके एक मिनट, तुम लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा, मान हस्ती है मैं। ओके, यहाँ पे स्टार्ट और एंड मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। व्हेन आई से 2 वी वर्क इन अ वेरी सिंपल मैनर। 2 इज अ स्टेप साइज, सो स्टार्ट से एंड अल्टरनेट उठाएगा, यानी कि स्टेप ऑफ 2 पे जंप करेगा, नथिंग बियॉन्ड दैट। ओके, एवरीबॉडी क्लियर है? फी 2 आंसर्स दिख तो रहे, गुड टू सी। Jit has given this. Okay. पहला रंजीत इसमें सिर्फ ब्लैंक प्रिंट होगा, तो इट्स एडवाइजेबल टू स्टार्ट विद 1, क्योंकि याद है 0 लेगा ये। 1 से चालू कर, फिर लेंथ तक जा और खेल के सोच। जी सर, थैंक यू। सिमिलरली डू चेक इट आउट कि लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो रहा है क्या, बिकॉज वो भी एक गड़बड़ होगा। Okay. So last 1.5 minutes to go. Come on, people. I want more answers. I would love to see more answers coming in. Sir, I have something to say. Yeah, go ahead. सर मैंने बहुत बार नोटिस किया कि आप जैसे कहते हो कि आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा या फिर आपने जावा में पढ़ा होगा वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे 95% जो बच्चे हैं ना वो नॉन आईटी बैकग्राउंड से, तो बेसिक किसी का भी स्ट्रांग नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपको शायद ऐसा लगता है कि सब आईटी बैकग्राउंड से होंगे ऐसा। नहीं, नो इश्यूज इन दैट केस। एनी टॉपिक जैसे कि कस्टम का सुबह आया था या इंडेक्सिंग का आया था, फील फ्री टू। मेरा प्रॉब्लम कैसा है दोस्त, इट्स बीन लाइक 16 years आई हैव बीन ट्रेनिंग इंजीनियर्स, मास्टर्स और डिप्लोमा होल्डर्स। तो प्रॉब्लम ये है मेरा नो लैंग्वेज में ही वो आ गया, एज वी हैव डन दिस, एज वी हैव, सो डोंट वरी। एनीवेयर अभी तक कुछ ऐसा पार्ट है जो नहीं समझा या आई जस्ट स्किप्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू यू? नहीं सर, मैं बस बता रहा था कि आपको ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। नहीं, परफेक्टली ओके buddy, perfectly okay. अच्छा हुआ बोल दिया। Anywhere, but still I'm saying this is to everybody, not he was he was kind enough to directly tell me कि सर ऐसा है, but even anywhere, no, I love few people जिन्होंने directly बोला सर ये custom का बोलो, ये keep on doing that, don't worry about what I assume, because मेरा जब तक teaching का सवाल है I don't assume and teach, so इसलिए मैं बहुत ground level से जाता हूँ, but हाँ बोलने में मेरा आदत हो गया होगा, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, don't worry. Okay, so now thanks for the help here. Now let's go ahead, closing the timer and now talking about the next thing. अब भैया हम लोग कैसे करेंगे? There are a lot of right answers coming in, but इस concept को थोड़ा समझ भी लेते हैं, इस concept को थोड़ा understanding पे भी लाते हैं.
सो सर स्लाइसिंग है वो तो क्लियर है, लेंथ पे हम लोग चलेंगे वो भी क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं a इज इक्वल टू 11 22 33 44 55 66 जस्ट अ नंबर फॉर I in range len of a। अब ये मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड दिस। प्रिंटिंग was done for a of colon of I। मतलब सर इंडेक्स के हिसाब से प्रिंट करोगे, देख लेते थोड़ा गड़बड़ क्या होगा इसमें। तो पहला तो ब्लैंक हुआ और लास्ट प्रिंट नहीं हुआ। इफ यू सी फर्स्ट लाइन इट इज ब्लैंक एंड लास्ट में 66 उड़ रहा है। दो काम, 1 डाल के रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। पहला ब्लैंक हट गया सर, लेकिन अभी भी लास्ट प्रिंट नहीं हुआ। सो लेंथ है ना +1 एंड हियर गोस। So we have 11, 22, 33, 44 and 66 coming into picture. Reverse, I'm very sure you guys can do, but I'm just giving you a clear idea about how to play this. Clear? Very, very clear with this. Any doubt, any query? People, thumbs up if clear. Sure. Lovely. वो स्लाइसिंग का बताइए समझा Okay. अरे बहुत जल्दी पूछा रे। Now when you talk about slice, understand slice में जब भी आप बात करते हो, when you talk about 10, 20, 30, 40 and 50, slice में 3 टर्म दे दो। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ एंड करोगे, सबसे बेसिक समझ और स्टेप। तो अगर मैं बोलता हूँ अमर मुझे यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, तो दिस इज 0 1 2 3 4, तो मुझे बोलना पड़ेगा A1 से स्टार्ट कर और 4 पे रुक। स्टेप 1 क्या, यानी कि 4 पे रुक जाएगा, 1 2 3 3 चीज आएगा, यू विल स्टॉप एट 4। तो 4 कंसीडर नहीं होगा मेरे दोस्त। ओके, यू विल स्टॉप एट 4, 4 कंसीडर नहीं होगा। सिमिलरली डिफॉल्ट वैल्यूज भी होते हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यूज में फायदा ये है, बाय डिफॉल्ट स्टेप का साइज 1 ही रहता है। so even if you don't specify this you will be still able to work with it. You will still able to work with। वैसे उल्टा भी है, if you don't specify, सिर्फ कोलन देके 4 दिया, उसका मतलब मैं 0 कंसीडर कर रहा हूँ, तो 10 20 30 40 तक सब लेगा। उल्टा अगर यही चीज मैं कहूँ कि अमर लेट्स से 3 कोलन दे, तो ये एंड कंसीडर करेगा स्टार्टिंग विद 3, तो 40 और 50 मिलेगा। दैट इज व्हाट स्लाइसिंग इज अबाउट। क्लियर दोस्त? यस सर। चलो गुड। सो एज वी गो फर्दर, एज वी टॉक फर्दर, यार इतना तो हम लोग को समझा, हम लोग ने कहा इटरेशन है और वर्क करते हैं। अब लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट एम्प्टी लिस्ट एंड देन एडिंग डेटा टू द लिस्ट। नाउ उसके लिए वर्चुअल ऑन करके रख, मैं कन्वर्ट करूं। ओके, so now when you tend to talk about, अब स्क्रीन दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, एक वर्चुअल स्क्रीन और एक मेरे अंडर का। जस्ट गिव मी अ सेकंड। और ऑन हुआ, just a minute guys। So now there are various methods which we are going to work with। I would request people to either have a quick view to these methods, or else as we work you guys can start making a note of this। प्लस मैं क्लास बना दूंगा, क्लासरूम बना दूंगा, वहां से तुम लोग को लिंक कर दूंगा जहां पे मेरा डेटा पीपीटीज एंड बाकी की चीजें मैं शेयर कर दूंगा। सो इट्स इजियर फॉर मी टू वर्क थ्रू, और तुम लोग के रिलेटेड असाइनमेंट्स और ये चीजें भी वहां पे फायर हो जाएंगी। सो जस्ट ऑन चेक कर। Yeah। साइड में ले ले। Okay people, now as you could see already changes हुए हैं। So data structures I'm not interested, we have already listed down this। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होगा। So I'll save my time in writing, but yes तुम लोग को दिखते रहेगा। So whenever you talk about list, ये तीनों मेथड का स्पेशलिटी है। There's a
these methods are used to add data to the list. So I can create an empty list. I can append, that is add at the end. I can insert. Insert means at a specific location which I specify. It should be a valid location, वरना वो insert left या insert right की तरह work करता है. And अगर मेरे पास already हमारे एक list है और मुझे list में डालना है तो then I have to work with extend. So one line explanation to work with, वरना theoretical तो माशाल्लाह दिया है मैंने. So concept is very simple. The first thing is to add at the end. The second is add at a specific location, and this is to add another existing list at the end of the current list. Now this might not make any sense to us. So for that, मैं हूं ना. So when I technically say Amar A is equal to blank, ये एक blank list बना. फिर मेरी इच्छा हुई कि नहीं यार अमर डेटा डालना. Do you work with append? Let's say 10. I say append. I say 20. I say append 30. Unknowingly, knowingly, एक simple काम करते जाए. 10, yes. 20, yes. 30, yes. So 0, 1, 2. अगर append 40 करोगे तो इसके पीछे जाएगा. Should be clear by now. अच्छा, सर मेरे को ना 10 और 20 के बीच में कुछ डेटा डालना. Then you can do this. Insert. यहाँ डालना है. Location 1. Let's insert 15. तो क्या होगा? तो इसमें ओवरराइट नहीं होगा. डायनामिक है ये. स्पेस जनरेशन होगा. सर मतलब 10 को कोई हाथ नहीं लगाएगा. But because you wanted 15 as position 1, 20 और 30 भाई साहब खुद ब खुद पीछे चले जाएंगे. So they go back behind and gets insertion. अब इंसर्ट करते वक्त संभल के, बिकॉज अगर आप आउट ऑफ रेंज यानी कि अवेलेबल डेटा से ज्यादा लोकेशन दे दोगे तो ये या तो इंसर्ट लेफ्ट कर देगा या इंसर्ट राइट. सर मतलब ओके, think and tell me what would happen if I do this. Insert -4, 100. क्या लगता है सर? -1, -2, -3, -4. फिर -4 इधर आएगा सर. Obviously we all understand क्या होगा. 100, 10, 15, 20, 30. अगर जोश में आके मैंने -6 भी दे दिया होता ना तो भी यही होता. मतलब अगर तुमने एक रेंज के बाहर का डेटा दिया तो मैं बाउंड्रीज पे ऐड कर दूंगा. अगर पॉजिटिव इंसर्ट 1 के जगह पे कंसीडर दैट आल्सो. अगर मैंने इंसर्ट करते हो आई माइट हैव नॉट जोश में हम लोग बहुत बार करते हैं ना वैसा कर दो. इंसर्ट एट 10, 400. ए भाई यू डोंट हैव 10th लोकेशन. Doesn't matter. बोलेगा नहीं है ना, ठीक है वो पगला है, छोड़ दे. 400 एंड में. So that is how you work with. So इसीलिए मैंने कहा if you give proper address it will insert at a given location. If you give proper address it will insert at a given location. If you don't give proper address and you give out of boundaries, then my dear you are in trouble. वो लेफ्ट या राइट में डिपेंडिंग ऑन आपने क्या इंडेक्स दिया है, लेफ्ट या राइट में उसे प्लेस कर देगा. दैट्स अ बिगर पिक्चर जिसका आप बात कर रहे हो. इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस थिंग? पीपल यस नो वेटिंग. Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलो थैंक यू. Yes, sir. अब ये तो ठीक है सर मेरे पास ना पहले से लिस्ट है, उसका क्या करूं? अगर मेरे पास एक बी नामक लिस्ट है, दिस में भी 11, 22, 3 है मेरे पास, तो वो मैं इंसर्ट या अपेंड से नहीं वर्क कर सकता. If I want to combine, I'll say a dot. If you can see extend, say extend by b, तो क्या होगा? पहले a का डेटा आएगा, that is in our case now बड़ा हो गया ये 10, 15, 20, 30 and mind you 400 also. And then the series of, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे शिफ्ट मार रहा हूँ, but then the series of 11, 22, 3 starts into picture.
Clear with this? देख लो, समझ लो. So we can go on a coding bench and so that's the reason I use this virtual system, because इसमें मेरे लिखने का time बच जाता है. Plus you have a very nice English literature to put into, and I can use my own ways to explain what English is about. Everybody clear? तो पहले तो ये देख लेते एक बार, फिर भी when people have doubt, feel free to ask. तो अब अगर बात करूं मैं, अमर क्या प्लान है? ये प्लान सिंपल है यार, empty. जस्ट टू प्रूव द पॉइंट कि भाई सच्ची हम लोग एम्प्टी बना रहे, चलो इसे रन करते हैं और पैरेलली तुम्हारा क्वेश्चन पूछते हैं लेन ऑफ ए. सर बट उसमें कुछ नहीं है, तो शून्य लेंथ आएगा, भूलो मत. सो एज वी वर्क फर्दर, अपेंड 10. अब उसके नीचे मैं 2 प्रिंट्स डाल रहा हूं. वी से टोटल एलिमेंट्स कॉमा len of a comma colon a a. सर क्यों ये बार बार मैं रन करूंगा? सर करंटली 0 एलिमेंट्स है तुम्हारे पास. चलो अब अप एंड रन करो, प्ले करते हैं. एक एलिमेंट 10 का है तुम्हारे पास, 30. तो सर 2 एलिमेंट है, वेरी गुड. अब मेरी इच्छाएं बढ़ गई, मैं बोला नहीं यार, व्हाट इफ आई वांट टू इंसर्ट 20 इन बिटवीन. एट लोकेशन 1 आई एम इंसर्टिंग 20. सो प्लेइंग दैट, तो ऑटोमेटिकली 30 पीछे हट जाएगा, 20 उसके जगह पे आके रुक जाएगा. बी हैप्पी विथ इट. तो ठीक है, चलो सर अच्छी बात है. अब अपना जोश बोलता है सर -5 मैं ना 200 स्टोर करेगा सर. अब -5 आइडियली मेरे पास नहीं है, -5 आइडियली नहीं है, बट सर एरर नहीं दिया. मैंने क्या समझाया था? अगर तुम आउट ऑफ रेंज दोगे तो बोलेगा पगला है, रहने दे, लेफ्ट में या राइट में इंसर्ट करके छोड़ दे, इसको अक्कल नहीं है. नो, जैसे आपको घर पे ट्रीट किया जाता है. सो दैट इज हाउ यू वर्क विद. सो गिवन out of range insert, this is one common interview question. If I give insert in out of range format, what would happen? It will insert to left or to right, or you can say it would insert at the beginning or at the end of the list. Yaad rakhna hai. If you give index which is out of range, then my dear, remember this, you will end up inserting at the starting or at the ending. You will end up inserting at the starting or at the ending. Starting or at the ending. Remember that very, very well. People make it a point that you get that. Okay. अब सर ठीक है, आपने एक्सटेंड का तो बोला, आपने बोला कि सर एक्सटेंड होता है वो. What if मैं एक्सटेंड के जगह पे अपेंड ही करूं दूसरा लिस्ट, तो क्या एरर आएगा? नहीं चलेगा, बिकॉज दिस आर द क्वेश्चन व्हिच पीपल वुड आस्क यू एट द इंटरव्यू बेंच. और तब तुम्हारे पास सोचने का समझने का कोई ऑप्शन नहीं होता. अच्छा, यू डू दैट गेस गेम. तो चलो मैं खुद तुम लोग को लेके जाता हूँ वहां पे, मैं खुद तुम लोग को लेके जाता हूँ यहाँ पे. तो नाउ इफ यू वांट टू प्ले विद दिस, जरा ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ. Consider I have another list, so I have B coming into picture, which says 11, 22, 33. ठीक है, प्ले करते हैं. अब मैं पहले A dot append B ट्राई कर रहा हूँ. क्या सर कुछ भी फालतू में आ गया ना, कोई एरर तो आया नहीं. जरा रुको, लेकिन क्या हुआ समझो. You realize what has happened. You inserted a list inside another list. तो कॉम्प्लेक्स हो गया. अच्छा सर. तो सर मतलब कंसिडर दिस वे, C is equal to AA BB CC. अगर ऐसे होता और वर्क करता, जरा ध्यान से. अब अगर मैं कहता B dot
Now we have extend, right? So I'm using extend C. Because you need to tell me, this is a common interview question, what would the difference would be in extend and append? Anybody could tell me the difference that is on screen right now? Or while appending, it takes at the specific index. The whole list it takes in a specific index. While extend it extends by last index. Sir, in While append, append, they directly It's- taken a list, directly taken a P, and while extend, they taken a element in the C. It's considered as one element. extend में सिर्फ element लेता है वो. Okay, I'll Sir, put it there's in the a simplest one. Sir, Okay, there's a list, right, sir? In the first case. agree. So remember, when you say insert or append, याद रखना concept wise, that will add entire list as an element. So that creates nested list. List के अंदर list डाल रहे हो, nested list बन जाएगा. Whereas in extend, you do not copy list, you copy element of a list in another list. समझा फर्क? I repeat my statement. In dot append or dot insert, you will create a nested list by adding a list within another list. अब list के अंदर दूसरा list डालोगे by adding a list inside another list. Adding a list inside another list. Adding a list inside another list. Okay. Ulta. In dot extend, you will copy elements of the list into another list. You will copy elements of another list or element of a list into another list. I think फर्क बहुत clearly समझ में आ गया होगा. Simple yet important. पंडा समझा सबको? Any doubt, any query, anybody? People, give me thumbs up if clean. Extend will only add elements at last, na? हाँ, that is by default, right? Append, इसलिए मैंने append और extend को compare किया ना. दोनों में add में ही end में ही जाएगा, I would say. Okay. Clear? Okay, so this is what we are talking about. This is how we work with. So people, let's try to work with. Let's try to operate with. Let's go further. People, how do we talk about? How do we work with? आगे क्या कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? So people, let's try to understand this concept on a bigger scale. ठीक है, चलो यार ये समझ के हम लोग बात कर रहे हैं. We are working with it. अब इस concept को थोड़ा बड़ा करते हैं. अब इस concept को थोड़ा और बड़ा. ठीक है. ये सिस्टम तो है. अब इस सिस्टम को जब हम लोग आगे जाते हैं, अभी तक तो सिर्फ इंसर्ट का बात किया था. मैंने जस्ट बात किया था हाउ टू इंसर्ट एंड ऑपरेट, हाउ टू इंसर्ट एंड वर्क. बट ऑब्वियस है इंसर्शन जब होता है, रिमूवल आल्सो इज पार्ट ऑफ इट. नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो रिमूव के लिए काम आते हैं. तो लिस्ट ऑफ मेथड्स, रिमूव, पॉप एंड क्लियर. क्लियर सबसे सिंपल है. ये लिस्ट रखेगा, कंटेंट उड़ा देगा. लिस्ट रखेगा, कंटेंट उड़ा देगा. So list.clear will keep the list, contain will be removed. ये दोनों थोड़े इंटरेस्टिंग है. रिमूव ड्यूअल वे है. रिमूव अगर तुम लोग एलिमेंट दोगे तो एलिमेंट रिमूव होगा. रिमूव अगर तुम एक पर्टिकुलर एलिमेंट दोगे जो नहीं है तो एरर देगा. ओके सर पॉप. अब पॉप का एक स्पेशलिटी है. इफ यू डोंट गिव दिस आई, अगर ये आई नहीं दोगे तो लास्ट एलिमेंट रिमूव होगा. विथ कंटेक्स्ट टू स्टैक नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर में, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट डालता है. यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले बाहर निकालता है. ये भी वही करेगा. सो पॉप विल रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द एंड इफ नॉट गिवन एनी इंडेक्स. अगर इंडेक्स दोगे तो वो इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव होगा. नाउ दिस वुड प्रोबेबली वोंट मेक एनी सेंस. फॉरगेट इट. सो लेट अस मेक सेंस बाय एक्चुअली लुकिंग एट आवर कोड. तो अगर मैं बात करूं,
करंट स्टेट पे लेके आते हैं, करंट स्टेज पे लेके आते हैं. कंसीडर दिस वे कि हम लोग जब बात करते हैं 10, 20, 30, 40, A dot remove to be valid, A dot remove 20 be valid, but the way it will operate is different. Sir, matlab to go with, जरा ध्यान से देखो. Now considering this list itself, मैं A को ही आगे ले रहा हूँ. So I am having A just to show you A क्या है. So अब अगर मैं बात करूँ A dot remove 20 and again give you A. So we do have 210, 30, 200. So 20 straight away hai. That is what we are working with. That is how we are operating with. So when you go ahead next, if I say A dot, remove, मैं अब 1 दे रहा हूं. एरर. अच्छा सर, मतलब अगर एलिमेंट है तो निकाला जाएगा, नहीं है तो एरर देगा, राइट? थोड़ा और एक चेंज करते हैं. करंटली ए का कंटेंट देख लो ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन. वी हैव 200, 10, 30, 200 एंड एंटायर लिस्ट. ओके, पॉप ब्रैकेट रह गया, सॉरी. सो ना सर, इसने एक झटके में सब, हाँ, बिकॉज फॉर द लिस्ट दिस एंटायर थिंग वाज वन एलिमेंट which was a list itself 11, 22, 33. तो मतलब सर ए से निकल गया हो, देख लो. सो वेरी वेल. अच्छा सर, फिर आपने कुछ इंडेक्स का बोला था. इफ आई स्पेसिफाई 2, 0, 1, 2, या अगर मैं 1 स्पेसिफाई करूं तो बीच का 22 उड़ेगा. सर एक मिनट, ये कुछ अलग ही हो रहा है. ओके, लिस्ट देख लो एक बार. 230. अब मैं वापस 1 को उड़ा रहा हूं. दिस टाइम 1 is 30. So list again becomes 200, 200. यानी कि pop by default removes element at the end. If index is specified, pop will remove element from specified index. One more thing, sir. What if pop देने के चक्कर में हम लोग ने इंडेक्स ही गलत दिया? 10 रिमूव, वो एरर देगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. मतलब भाई, आई एम नॉट एबल टू सर्च फॉर व्हाट यू आर आस्किंग मी टू. पॉप 200, पॉप. अब वो बोलेगा भाई पॉप एम्प्टी, खाली हो गया. अब एक उल्टा क्वेश्चन है. यहां तक सबको समझा होगा? क्लियर बिटवीन पॉप एंड रिमूव पीपल? क्लियर बिटवीन पॉप एंड रिमूव? Yes, sir. Thumbs up if people are clear. Great luck. So now my question starts. अभी तक तो बस हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे. Interview wise, this is precisely geo interviews. Can you give me difference between dot remove method and dot pop method? Tell people, speak up. क्या फर्क है मेरे दोस्त? फर्स्ट आइटम लिस्ट होता है, लिस्ट डिलीट होता है. Sorry? रिमूव में, रिमूव में फर्स्ट आइटम डिलीट होता है, पॉप में लास्ट होता है. remove text Remove में items and रिमूव pop में हम text एलिमेंट डालते हैं index. रिमूव में, और पॉप में हम In pop इंडेक्स में डालते index. हैं. I do accept. Remove removes element given. Pop removes element at given index. बराबर है. चलो, ये तो एक बेसिक था. और एक
Switch. When remove By default, pop removes the last element, but by Perfect. default, remove don't. Dot remove empty, not possible. Give error. it returns Dot the pop, value. Gives the last element. last element. Possible. और एक डिफरेंस अभी भी बचा हो. सर पॉप जब रिमूव करता है वो रिटर्न करता है पॉप Bullseye. लिस्ट Bullseye. Very well said, those. So remove removes, but not shown. Shows. ये चीजें होती है जो इंटरव्यू में मैटर करे. ये चीजें होती है जो इंटरव्यू में मैटर करे. ओके ये चीजें होगी जो इंटरव्यू में मैटर करेगी. People, please make it a point that when you go through with this, you should be able to get clear understanding with this, clear logic with this. This is what we would be working on. Okay, people, be clear with this. Be clear with this. समझा सबको? अपना अपना लैंग्वेज में जिन्हें जो लिखना है लिख लीजिए. हेलो सर. Yeah, go ahead. सर ये डॉट रिमूव है ना, डॉट रिमूव, इसमें मतलब रिमूव करने के बाद हमें चेक करना पड़ता है क्या? इसलिए हमने ऐसा मतलब लिखा है क्या, डॉट रिमूव्स बट नॉट शोन? ये पूछ रहा है? हाँ हाँ. ए भाई, डॉट रिमूव तू रन करते रहे इस पे, तुझे दिखता है कि कौन सा रिमूव हुआ? नहीं. पॉप तू कुछ भी मत कर, जो एलिमेंट रिमूव होगा वो तुझे दिखेगा. वो दिखेगा, समझा? हाँ हाँ सर. हेलो सर. या गो अहेड. सर डुप्लीकेट होंगे तो फिर वो दोनों डिलीट कर देगा ना? ना 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 ना, वो रिमूव में बाय डिफॉल्ट दोनों का एक स्पेशलिटी है. अभी इसमें तो इंडेक्स ही है, तो नथिंग मच टू से. बट जिनमें डुप्लीकेट्स होंगे रिमूव में, तो फर्स्ट ऑकरेंस विल ओनली बी रिमूव. ओके, थैंक यू. ओके. And sir, if what if we want to delete second item? Then you have to write a program for that. There is no shortcut to this. Filtration का तरीका है, but otherwise you will not have a option. You will not have a option. Sir, can we replace an element with another one? Then you remove it and replace it. So remove and insert दोनों तुमको कोड करना पड़ेगा. You don't have a dot replace method straight away. Okay. So I hope people are clear and understanding. All good? People clear? Any doubt? Any query? Clear है? Interview wise be very very clear. ये operations में काम आएगा, ये operations में use होगा. So people make it a point that you get that. Going one step further. अब लिस्टिंग का बात आता है, इंडेक्सिंग का बात आता है. तो लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ एक्स, तो इट रिटर्न्स द आइटम. अब इसमें भी एक फंडा है, याद रखना. द कॉन्सेप्ट इज दिस वे कि जब आप एक पर्टिकुलर आइटम देते हो मल्टीपल ऑकरेंस में, फर्स्ट इज ओनली टारगेटेड. तो ओके सर, मतलब एक उसका इंडेक्स देगा, दूसरा काउंट करेगा. सॉर्ट और रिवर्स तो सिंपल है, वो सॉर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा. But a better option of understanding this would be to put it together what I intend to work with, why I or how I intend to work with it. So be very, very careful when you work with. Concept wise, putting you to the back screen again, people, please make it a point. So हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग कर रहे हैं? So people, make it a point that you work with. So how things are, जरा ध्यान दो. Again, let's play this with 11, 22, 33, 11.
55, 66. So we do have duplicates now. Duplicates are allowed in list by the way. So जाते हैं. अब अगर हम लोग बात करते हैं A dot index. मैं बोलता हूँ अमर 11 ढूंढ. 11 इंडेक्स 0 पे आता है ऑब्वियस है, तो मिल गया. पर सर आगे भी है ना, तो तुम लोग को पोस्ट 0 ढूंढना है तो तुम लोग को मेंशन करना पड़ेगा. ये अमर 1 से ढूंढ, सो आई कैन से कॉमा 1. तो अब वो 1 से आगे ढूंढेगा. देन इन दैट केस इट विल गिव मी 3. तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली वर्क विद मल्टीपल, और यू कैन इंडेक्स इट एंड वर्क विद. सो इंडेक्स, अच्छा सर एलिमेंट है ही नहीं तो ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. अगर मैं बोलूं 420 जो नहीं है, so if I run this, congrats, not in a list. तो ये एरर थ्रो करेगा if element not found. ये छोटी छोटी बातें इंटरव्यू में टारगेट करते हैं हम लोग. What if element is not there in a list? याद रखना, इंडेक्स एरर थ्रो करेगा, इंडेक्स एरर थ्रो करेगा. Be very very careful. Everybody clear with this? People, yes, no, can't hear. Is everybody clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Beautiful, thank you. Keep it coming रे, मुझे लगता है थोड़ा ये सब लोग हो साथ में. So when you talk about index, उससे उल्टा है count. Count अलग ही फंडा है भाई. ये इंडेक्स नहीं देता, ये सिंपली गिन के बोलता है कितने एलिमेंट्स है गिवन वैल्यू वाले. अब जैसे कि 11 2 है, बट इसका भी एक अच्छा प्यारा सा चीज है. इफ यू गिव समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, ये एरर नहीं देगा, 0 देगा. एज यू कैन सी फ्रॉम द लिस्ट, 0 खत्म भाई. 0 है, मैं कुछ नहीं कर सकता. तो ये दो मेथड बहुत काम के तुम लोग के लिए. इंडेक्स आइटम का इंडेक्स वैल्यू देता है, काउंट आइटम का नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन देता है. क्लियर विद दिस टू? इंडेक्स आइटम का इंडेक्स वैल्यू देता है. सर आइटम नहीं मिला तो एरर देगा, एलिमेंट नॉट फाउंड. काउंट आइटम का नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन देता है. अगर आइटम है ही नहीं तो काउंट 0 देगा, एरर नहीं देगा. मैं गेट अ पॉइंट? ओके. Similarly, we have list and sort coming into picture. Sorry, list, reverse and sort coming into picture. ये दोनों जो नाम है वही काम है, but there is a twist to this. Reverse reverses the entire list permanently. Sort sorts the entire list permanently. ये mention करो clearly. क्यों सर? Sort करके method भी है मेरे पास, और dot sort करके method के अलावा sorted करके एक function भी है. Now this won't make sense till the time we actually run it. So forget this. अब भाई मैं खुद उतर रहा हूँ वापस programming पे. People, let's pay attention to how and what we are working with, how we are operating with. So how things are going to work, how things are going to operate, people. So we work this way, we operate this way very clearly. So people, pay attention to this. If I say, let's say 11 to 55 4 28 22. सर हाँ, अब जरा देखो, people have to target and tell me sorted A. इसके बाद मैं वापस A पूछ रहा हूँ. उसके बाद स्क्रीन पे जरा ध्यान देना. सॉर्ट मैंने जो भी सिखाना था बिना बोले मैंने स्क्रीन पे लाया. नाउ माय क्वेश्चंस वुड एक्चुअली स्टार्ट. सबको दिख गया? कोई क्वेश्चन है इसके बारे में पूछने के लिए? तो अब मेरे क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो. अब जो मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्टेड एंड डॉट सॉर्ट? Sorted makes it temporary. Temporarily. Sort the list temporarily. Yes. Perfect. Dot Perfect. sort it is permanent. Permanent. ओके, गुड टू सी दैट. कि चलो सर एक सिंपल सा फंडा है सर. आप जब बात करो सॉर्टेड, टेम्पररी सॉर्ट करता है, ओरिजिनल को फर्क नहीं पड़ रहा है. एंड और एक चीज तुम लोग भूल जाते हो बोलना, एंड इट रिटर्न्स द सॉर्टेड लिस्ट. दिख रहा है सॉर्टेड क्या कर रहा है? वो प्रिंट कर रहा है. ये सॉर्ट ने कुछ किया क्या? वो कर रहा है बट बोलेगा कुछ नहीं. ठीक है ना, हो गया ना, तो खुद देख ले भाई. तो इसीलिए याद रखना, डॉट सॉर्ट विल नॉट रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट, इट विल सॉर्ट द करंट लिस्ट. सॉर्टेड will sort the list and return it across, but temporarily. So it will return a sorted list. Original को कोई असर नहीं करेगा, जबकि ये original पे पूरी तरह से असर करेगा. अब भाई किसी ने पूछा नहीं, तुम लोग बहुत प्यारे लोगो, सर
मेरी इच्छा है डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या करूं? जो है वो ऑप्शन सर रिवर्स ट्रू कर दिया, देख लो क्या होगा, समझा क्या होगा? और यही चीज यहाँ पे भी आता है। सो मतलब सर क्या फर्क पड़ेगा, देख लो, लिख के रखो, क्योंकि इंटरव्यू में ये गूगली हम लोग डालते हैं। हाउ वुड यू डू इन डिसेंडिंग ऑर्डर? जस्ट रिवर्स इट, खत्म, जस्ट रिवर्स इट। दैट इज अ बेसिक थिंग जिसका आप बात करो, दैट्स अ बेसिक थिंग जिस पे आप चल रहे हो। सर एक डाउट है। बोलना दोस्त। सर कोई भी आइटम का रिमूव करना है तो हम रिमूव यूज करेंगे, या कोई इंडेक्स इंडेक्स देखिए करना है तो पॉप यूज करेंगे। पर वही अगर हमें कोई लिस्ट एक एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड की है और हमें वो जो न्यूली एडेड लिस्ट है अगर वो निकालनी है तो क्या यूज करेंगे? Dot pop would be the only option because list बहुत बड़ा होगा, so you cannot match the list and remove it. You have to target the index. तो pop अकेला option होगा दोस्त, clear? Okay. So everybody clear till now? फंडा समझा क्या क्यों कैसा किस तरह से हम लोग चल रहे हैं? Any doubt, any query, anyone? People clear, I feel. चलो कुछ लोग लिख रहे हैं, so I'm going slow down with that. क्लियर बहुत सिंपल सा है मेरे दोस्त, क्लियर का काम है क्लियर करना। सो द बेसिक आइडिया ऑफ क्लियर इज तुम्हारा लिस्ट रहेगा, उसके अंदर कुछ रहेगा नहीं। कभी ना कभी लाइफ में हुआ होगा ना, काश लाइफ में इतनी मोह माया है सब हट जाए, काश लाइफ नॉर्मल हो जाए, ऐसे सबको होता है कभी ना कभी। सो क्लियर एग्जैक्टली वो करता है परमानेंट मैनर में। सर मतलब ए एक ब्लैंक हो जाता है, वर्क वन सिंपल वे, मतलब ए लिस्ट तो रहेगा बट लिस्ट के अलावा कुछ नहीं है, मतलब एम्प्टी लिस्ट बना देता है। तो क्लियर प्रैक्टिकली निकाल देगा अंदर के सारे कंटेंट। ओके, आई फील एवरीबॉडी वुड बी वेरी क्लियर ना। ओके, so I feel everybody is clear with working with, चलो good to see this। अब बात करते हैं क्लियर के वर्किंग का। अब यहाँ तक तो मैंने जो बात किया, यहाँ तक जो मैंने कॉन्सेप्ट्स रखे is working with list। अब let's go on the coding front। This question is pretty important to work with, but before I could go, there is some coding part which I want you guys to understand। We have listed few things: sorted, min, max, and sum। Believe me, they are most commonly used in terms of industry day to day। Hey, सबसे maximum क्या है, सबसे कम क्या है? And since अभी I'm currently training and working with Motiwal Oswal, which are the शेयर ट्रेडिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिलीव मी, उस चक्कर में मेरे को पढ़ना पड़ रहा है कॉमर्स की बुक। मैंने लाइफ में कभी मैथ्स पसंद नहीं आया, बट आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे द गाय कम्स एंड टेल्स मी इफ वी टॉक अबाउट इक्विटी द थिंग्स वुड चेंज। मैं ना ऐसे टिपिकल इंजीनियर था, तो पहले जाके गूगल मारा इक्विटी और शेयर्स का, भाई कुछ तो डिटेल थे, मुझे अंदर जाके मुंह खोलना है। अब वो खोला, उसके बाद ये वापस आया। If the share value is inclining towards the petroleum product, what prediction will go? मैं 2 मिनट तक सोच रहा था बोल क्या रहा है भाई, तू हिंदी इंग्लिश में बोलना भाई, ये अपने को समझ में नहीं आता। Jokes apart, but then I had to tell them, see, you realize, I'm a tech guy. You tell me algorithm, I will be doing it. तू share का मत बोल। So now I remember, they have a term called fintech, financial technologies, जिसमें currently my project was going around with them। So they work with analytics in a different scale। They have a prediction engine, they have genetic algorithms which predicts कौन से शेयर genetically धीरे धीरे ऊपर आएंगे। And the smart move which these people are doing, I mean I have seen them actually working with it, कि जो companies है जिनका नाम भी hardly अभी तक सुना, genetic algorithm के रूप they have a list of companies which they would get into shares के हिसाब से। And I have seen XYZ company, so छोड़ दो, but XYZ company जिसका मेरा ऐसे बात चल रहा था जेनेटिक्स से, एक हम लोग को कंपनीज का लिस्ट मिला।
Now, just to check whether our prediction engines are working properly or not, whether the algorithmic coding, or as we call it, algorithmic trading was working properly or not, we had to monitor something for over a month. I'll tell you, जो algorithm ने generate किया list of 12 companies, उसमें से 10 companies were making a good business. The difference was the share value was 83.2 से लेके range of 75. Currently, कल का ही figures है, we were just going through with that. कि अमर क्या हुआ? Suddenly the figures are 380 to ranging of 477. So you imagine बाकी का जितना मैथ हम लोग को थोड़ा बहुत आता है, somebody who has invested $1,000 in that would suddenly have a 4,000 with them. So this is what exactly list का काम आता है. हम लोग भर भर के उसमें list use होता है. Peak क्या है? Top most क्या जा रहा है? Minimum पे कौन आ रहा है? एक एवरेज कितना आ रहा है? एक कंपनी का 10 महीने का एवरेज शेयर वैल्यू निकालो. तो इसमें ये फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होंगे. मैं कौन से फंक्शंस का बात कर रहा हूँ? People, be with me. We are talking about sum. We are talking about sorted, because हम लोग सब कुछ नहीं temporary sort करते हैं. We talk about min. We talk about max. अब इन सारे मेथड्स का ना एक बड़ा लिमिटेशन है. ओके, एक बड़ा लिमिटेशन है. हाँ धीरज, गिव मी 2 minutes. So एक बड़ा लिमिटेशन इन सबका, सिंगुलर डेटा. सिंगुलर डेटा यानी ये एक ही तरह के डेटा पे काम कर सकता है. इंट, फ्लोट, यस, नंबर डेटा, स्ट्रिंग, कैरेक्टर डेटा, मिक्स मत करो. क्यों? तुम हाथी और मछली को कंपेयर कैसे करो? I mean, I remember आज सुबह ही, when I was working out, I don't have a body would probably have a very much flexibility and all. I'm somebody who can lift weights, but don't expect to. I have a friend, he goes to a lot of yoga and all and all and all. वो ऐसा खड़ा रहेगा पूरा टेढ़ा होके मेरे को बोलता, देख, I can do this. उस टाइम पे उसका बैड लक खराब था कि I was carrying weights in my hand. बोले काम करना, ये पकड़ेगा, पकड़. मैंने पकड़ा और छोड़ दिया. बाद में गाली खाया उसका, बट जो क्या आदमी है यार. वो एग्जैक्ट, तू जब टेढ़ा होके आड़ा टेढ़ा एंगल से निकलता है ना, मैं भी वही सोचता है क्या आदमी है. Means he's been doing yoga and aerobics from 7-8 years. I'm somebody who's been into lift weights. तो फंडा सिंपल है. You cannot compare two things. You cannot have a string compare with int and float. Int float compare हो सकता है. ये singular data किसको बोलते हैं याद रखना प्लीज. Int float are singular data, यानी एक ही तरह का डेटा है. String is also singular data. इसमें कैरेक्टर विरेक्टर सब कुछ आ सकता है, बट दिस आर सिंगुलर डेटा. ये मेथड्स किसी भी दूसरे टाइप के साथ क्रॉस ओवर्स नहीं कर सकते. इंट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फ्लोट, यू कैन नॉट कंपेयर. यू कैन नॉट कंपेयर. ओके, सिंस आई एम रिमाइंडेड अबाउट, थैंक्स धीरज, अच्छा हुआ वरना मैं फ्लो में भूल ही जाता हूँ हर बार. तो ठीक है, इट इज 10:03 in my watch. 15 minutes break. So we would be probably starting with 10:20. We'll be starting. Okay. So take a small break. Again, as usual, I'm not leaving the meeting. Only thing is camera and mics would be off for a while. Chalo guys, see you soon. Thanks यार. ये भाई ऐसे देखते रहो, because I'm more into teaching. तो बहुत बार बहुत सारी चीजें skip हो जाती है बना. Thanks यार. So अब जाते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पे. सर क्या, अगर A में तुम्हारे पास 33, 3.3, 2.1, 20, 11 ऐसा डेटा है तो भी सॉर्टिंग तो होगा. यानी कि yes, I'll be able to find sorted of A possible. I'll be able to work with minimum of A. I'll be able to work with maximum of A. I'll be able to do sum of A. मतलब सर इसमें तो कुछ बड़ा बात नहीं है, मैं very simple है, but believe me, this makes your life much comfortable than anything else. सर क्यों? Because बहुत सारे calculations में तुमको min, max या sum ये चाहिए ही होगा. Sorted we many a times use it, especially when we want to have some kind of average coming up. So that is how we work. Now one of the question which we use in industry to check how much students are clearly aware of this concept. Best of luck. तुम लोग का infinite loop अब combine होता है यहाँ आके with the concept of working with list. Question जरा समझ लो, because then I'll give you 5 minutes for you to think about it. Question is, create a list
and keep adding data user stops. That's it. सर एक मिनट इसका कॉन्सेप्ट जरा समझने दो. यूजर जितना डेटा देते जाएगा, डेटा लेते जाओ, डेटा देते जाएगा, डेटा लेते जाओ. हाउ वुड यू डू दैट? इनफाइनाइट लूप ऑलरेडी हम लोग कल कर चुके हैं. append कल नहीं, अगर परसों कर चुके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. व्हाइल ट्रू वाला और ब्रेक वाला याद है? Append, yes, you will be using. While true, yes, you will be using. Break, you will be using. but ये करने के लिए कुल मिला के मैं सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ. You guys would be starting it by now. Go ahead. People do try it. क्योंकि इसके बाद ये स्टेज 1 है. ये इंटरव्यू में कोई नहीं पूछने वाला. पर मतलब इंटरव्यू का क्वेश्चन सुनना till the time you कोड करते रहो, सिर्फ मेरा प्रवचन सुनते रहो पैरेलली. So concept is very simple. Interview, what they ask is, accept n elements from the user, list total number of elements, enter some average, and list all the elements which are greater than the average. Congrats. 3i Infotech करके है, ICICI का बैकएंड है. उनके इंटरव्यू राउंड्स में इस तरह के क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं लोग, because ultimately they are into banking domain again. So be quick, people. Be quick. Five minutes. Come on, people. Come on. Go ahead with it. People, come on. सिर्फ एक आंसर अभी तक. और एक गड़बड़ है भाई. लिस्ट है, लिस्ट में अपेंड हो रहा है. इफ यू आर डन विद दिस, अंडरस्टैंड हम लोग नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं और अभी आपका इनपुट स्ट्रिंग में है धीरज. तो इसे नंबर में कास्ट कर. नंबर्स लेने के सर हमको. Yep, because इसका सेकंड स्टेज में इसलिए बोला ना, we need some average and then printing of all the elements which are greater than the average. That is stage 2. That is the actual interview question, my dear.
Okay, started getting few answers here and there. Good. Input अगर जय int में हो जाएगा तो तू blank check नहीं कर पाएगा. सोच समझ के. My turn. Chalo. Since it's 0, let's hit it off. Let's hit it off. People, now behind the screen, जरा ध्यान से देखो. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है. कुछ लोगों ने बराबर पिकअप किया है. ये एक एम्प्टी लिस्ट बना देते हैं. ठीक है. फिर एक while loop आएगा जो रुकेगा ही नहीं. That's our version of पुष्पा. वो झुकता नहीं, हम लोग रुकते. Let's go ahead with this. So अब क्या? What is the next going on? अब हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा होगा डेटा लेने पे. तो let's take E as an element. I'll be taking input. Enter data. Okay. तो डेटा तो ले लेंगे, बट सर ये तो int है, float है. अभी तक कुछ नहीं, अभी तक string है. इसी वजह से मैं ये कर सकता हूँ. वरना अब जरा संभल के let's press part. Append और यहाँ पे कास्ट डाल दे. ओके, मतलब नो, एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग इट इन द लिस्ट आई एम पुटिंग इट. ठीक है, डन. और वो एक ना एक दिन तो रुकेगा. तो सर 12 it would take 3.4 it would take 77.1 it would take 100 it would take. फिर मैं बोला बस हुआ है. So now just to check whether our job has been done or not, let's take this way. Voila, we have the data. यहाँ तक सब clear हो? People any doubt with this part of the code? हेलो सर. हाँ बोलना दोस्त. सर अगर ये a is equal to ब्रैकेट है, उसको अगर हमने while loop के अंदर लिया तो सर कुछ होगा क्या प्रॉब्लम? ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है. ये लाइन नंबर 2 पे सर जो है ना a is equal to ब्रैकेट लिस्ट वाला लिस्ट, अगर हमने उसको मतलब while loop के अंदर लिया तो मेरे दोस्त हर बार तो एक नया लिस्ट बनाते जाएगा, उसमें एक डेटा डालेगा, वापस उड़ जाएगा, वापस अंदर डालेगा, तो दैट वुड डिस्ट्रॉय द डेटा इटसेल्फ. क्लियर सर? लेकिन हम लोग जब यहाँ पे मतलब ये कर रहे हैं सर, अभी हम लोग अपेंड, तो अपेंड करते हो सर वो मतलब उसके अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए वो तो while loop के मतलब बाहर जा रहे हैं सर. फिर वो बट मेरे दोस्त एक प्यारा सा तेरा क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ. देख, अगर ये वाला डेटा मेरा, ओके, मैं जैसे आप बोल रहे हो आपके इस थियोरी पे चलता है. So do you realize every time you are creating an empty list and you are working with it? So 11, 22, 11, 99. अब मैं रुक गया. मेरा A में डेटा क्या दिखता है? Because every time you went, you created a blank list, which we don't want. तो इसलिए लिस्ट का लूप के बाहर होना जरूरी है, तो ही वो कांस्टेंट रहेगा. समझा? थैंक यू सर. Perfectly okay. Guys, keep on asking this. Why do you think मैं हर बार टाइम देता हूँ? Otherwise, would it be very easy for me to चलो हो गया, आगे जाते हैं. I really don't want to do that. So अब आगे का स्टोरी है. अब क्या? Mind you, अब तुम लोग को ये अलग लेवल पे लेके जाना है. I want you guys to do next stage. क्या करना है? List total elements, sum, and print elements greater than average. This is an interview question, mind you. सर अभी तक क्या था? We were just warming up. अब इंटरव्यू पे उतरे. मैं खुद ही बोल देता. Sum you will be using, len you will be using, auto iteration over loop you will be using. अब ये तीन चीजें मैं वापस रिपीट करता हूँ. Sum you will be using, len you will be using, and auto iteration over the elements you will be using. Why, क्यों, कैसे, तुम जानो. Come on, people. Make it happen. Make it happen. Come on. Easy. It's not out of the world. You guys can make a difference.
5 minutes, nothing more than that. बोलू ना बोलू, टाइमर चला दिया. Come on, people, be quick. It's not difficult. Let me put it this way. It's not difficult. It's very, very easy. इसके बाद stage 2 का भी एक question है. Then we'll be entering nested looping. यानी कि अब अगर मैं बात करूँ precisely working with a list in a very different manner. Okay, Parikshit has given one answer. Let me check it out. As you working with a break, len in some greatest is max. परीक्षित बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, बट मेरे दोस्त क्वेश्चन ही कुछ और है. क्वेश्चन देख, मेरा क्वेश्चन कुछ और है. So try to get me this answer. ये तो आपने ठीक है अच्छा किया, but then क्वेश्चन अलग है. Okay, some average, smartly done. Ranjit, good job. Waiting for others, you still have a minute. Thank you, sir. Good, yeah, good. Others also. The good thing is people are working, but मेरे पास 2-3 ही answer आता है. So I don't know what went wrong. People, go through, big way. Okay, interesting. Learn some and all. Average we are working, and we are working with average. This is Malkit Singh. Good, good buddy. Smartly done. Okay, Dheeraj going with yours. So
So sum you have taken in a sum by C, you can work it out. Good. Total, average, above. Dheeraj, iterate करना भूल गया. I want all the elements which are greater than the average. तो वो चाहिए, वो iterate करना पड़ेगा तुझे. Yes sir, yes sir. Okay. Rahul, good attempt, but I would strongly recommend जो if में तूने डाला ना, sum of L by count, try not to do that. Reason, अगर मैं एक प्रोग्रामिंग का बात कर रहा हूँ और हर एक स्टेप में मुझे बार बार अगर उसे नो रिकैलकुलेट करना है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माई प्रोग्राम गोज हाई, तो टेस्टिंग में प्रोग्राम फेल हो जाता है, क्वालिटी ऑफ कोड हम लोग बोलते हैं, वो कम हो जाएगा. ट्राई नॉट टू हैव मल्टीपल टाइम्स. ओके, तो कहीं एक बार कर ले, स्टोर कर ले और डायरेक्ट कंपेयर कर, क्योंकि हर बार अगर वो कैलकुलेट करते बैठेगा, प्रोसेसिंग पावर जाएगा, कोड क्वालिटी पे मार खाएगा फिर टेस्ट में. Okay, average sum by C, total, super done. Okay, good. चलो, मेरा बारी. People, check it out. What all we are planning to. अब अगर यही क्वेश्चन को मैं एनहांस कर दूं तो एक सिंपल सा है, A ट्रू है, वर्क कर रहा है, इनपुट ले रहा है, सब चल रहा है, यहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अब if I want to print total elements entered, comma len of A, ये तो हो गया सर. अगर एवरेज मुझे कैलकुलेट करके रखना है तो इट इज वेरी सिंपल, सम ऑफ A डिवाइडेड बाय len of A. सो ठीक है सर, दो हिस्सों में तो टूट गया. Very good, congrats. That's again a good option. Then when you tend to talk about average, if you want to print, just to show AVG, अब जो listing है, for I in A, if I greater than equal to A, print. That's it. So if you want even printing the list, fine, you can say list of elements play करते हैं. So if I go with this 22, 11, 99, 45, 66, 25, 35, 85, 79. हमें बोला बहुत हुआ यार नंबर. Look, so let's get few things. कहीं पे कुछ error आया, but तब तक का देख लेते हैं क्या हाल हुआ है. तो total we have said very clearly. Total we have said total elements are entered are 9. Average is so and so. List में कुछ गड़बड़ आया है. Why it is giving me error? Let me check. List for I if I is greater than. The error is मैंने error नहीं पढ़ा. Not supported instead of float and list. एक ही जगह एवरेज आएगा ना वहाँ पे. हाँ, average आएगा. My mistake. AVG. So let's go with it. So the concept remains again 22, 11, 89, 65, 44, 88, 77, 36, and then I said it done. So yes, if we go through with the entire list, what we have in our hand is we have total 8 elements which we enter. Average निकल रहा है 54 point something. List elements 54 से बड़े हैं 89, 65, 88 and 77. बाकी के जो elements जो उससे कम थे वो हम लोग ने print ही नहीं किए. This is what we intend to work. Everybody clear? Any doubt? Any query? Everybody clear? Then give me thumbs up. सर अगर मैंने जो किया मतलब मिस्टेक किया था कि सम लेन एल मतलब इफ में दिया था, तो क्या हर बार वो जाके चेक करता है? कैलकुलेट करते पड़ेगा. हाँ, तो that would reduce the quality of a code as I said. मतलब कंडीशन चेक नहीं करता डायरेक्ट, वो फिर से जाके कैलकुलेट करके फिर चेक. हाँ, कंडीशन नहीं, ऐसे समझ, कंडीशन चेक करने के चक्कर में वो पहले कैलकुलेट करेगा फिर चेक करेगा, which is consuming resources. उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा कुछ बढ़ता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बेटर उससे तेरा हम लोग कोड क्वालिटी बोलते हैं उसे. इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरिएशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. यस,
तेरा प्रोसेसिंग पावर अननेसेसरी बढ़ेगा. तो टाइम नहीं बट प्रोसेसिंग पावर नीड बढ़ जाएगा, which we don't appreciate. Clear? Okay, sir. Clear, sir. Thank you. Okay. One more question again from the interview rounds, guys. Best luck for this. Now consider this. I am giving a static list. Huh? 11, 22, 33, 11, 44, 22, 55, 66, 11, 77, 11, 88, 99. Again 11, 33. चलो थोड़ा रह गया था, डाल देते हैं. What do you intend to do with this? लिस्ट मैंने दे दिया, लिस्ट मैंने दे दिया. तुम लोग, मैं पिन कर देता हूँ तो तुम लोग को लिस्ट फुकट में मिल जाएगा, बिंदास. Now the actual job will start. What are we supposed to do, sir? List frequency of each element. मतलब समझा क्या करना है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा और प्यारा सा. 11 कितनी बार है, 22 कितनी बार है, 33 कितने है. ये स्टेज 1 है. इसके 2 क्वेश्चन वेरिएशन बनते हैं. ये पहला वेरिएशन है, इजी है. इसके बाद एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा. तो अब सबसे बड़ा मुसीबत है अगर मैं बात करूं इस तरह के क्वेश्चन का. माइंड यू, अगर बात करूं इस तरह के क्वेश्चन का तो एक तो फंडा है कि सर वो क्या 11 ढूंढने का और काउंट ढूंढने का. बट आर यू रेडी टू एक्सेप्ट ये कितनी बार आएगा? मतलब आई विल बी प्रिंटिंग 11 मल्टीपल टाइम्स बिकॉज 11 एग्जिस्ट मल्टीपल टाइम्स. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब ये मैं क्यों एडवांस में दिखा रहा हूं और क्यों तुम्हारे काम में है. दिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक्स अबाउट लिस्ट, नॉट ओनली लिस्ट क्वेश्चन. इसमें लिस्ट को सेट थियोरी के साथ ऐड करना पड़ेगा. सो जब सोच रहे हो, ये वापस मैं लूंगा, यही ई बुक से उठाऊंगा, यही मेरे कोलैब लिंक से उठाऊंगा. बट ये क्वेश्चन तुम लोग को लगता है खाली लिस्ट है, ये खाली लिस्ट नहीं है, ये कॉम्बिनेशनल क्वेश्चन है. लिस्ट और सेट थियोरी दोनों होगा. सर मतलब समझा नहीं. अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, ये ए है ना, ए सेट का स्पेशलिटी दिखाऊं. सिंपल सा, ज्यादा मेहनत नहीं करता मैं सिर्फ एक चीज दिखा रहा हूं तुम लोग की कि ए सेट क्या कर सकता है तुम्हारे लिए. चल भाई, कुछ दिखा, कुछ समझा? यस सर, रिपीट नहीं हो रहे सर वैल्यूज. तो सेट इज अ फिल्टरेशन विच वी वर्क. अगर तुम लोग ने मशीन लर्निंग या डेटा एनालिटिक्स में थोड़ा भी सुना पढ़ा होगा तो ब्लूम फिल्टर नाम का एक फिल्टर है. इट्स अ फिल्टरेशन थियोरी जहाँ का फंडा रहता है, जैसे चाय तुम लोग निकालते हो, एक बीच में फिल्टर रहता है. सिमिलरली ब्लूम फिल्टर इज अ स्पेशलाइज्ड फिल्टर जो एक पर्टिकुलर तरह का डेटा ही अंदर जाने देता है. ये एक तरह से फिल्टरेशन का बात कर रहा है. मैंने क्या किया, हर एक डेटा का एक ही टाइप जाने दिया. मल्टीपल रिपीटेशन है क्या खड्डे में, मैं एक ही जाने देगा नीचे. तो ये सेट है. तो मैंने तुमको सेट बना के दे दिया इस क्वेश्चन में. तो ये एक स्टेप तुमको नहीं आता था, मैंने दे दिया. बट इसके बाद पूरा लिस्ट का क्वेश्चन है. अब मुझे इसका आगे करो. सेट करके दे दिया तो तुम्हारे पास यूनिक एलिमेंट्स है, तुम्हें सिर्फ उसे काउंट करना है. अब कैसे करोगे वो देखो. Again, iteration will be used, but in a slight different way. Yes, count will be used, but कैसे? Let me help you of one more line of not code but a theory, which says use a set to iterate and a to count. अब इसमें अगर जिनका दिमाग चल गया तो मेरे दोस्त सब कुछ आ गया. ये एक लाइन ना अपना गीता सार है भाई. ये पूरा क्वेश्चन का आंसर वो एक लाइन में. हाउ वुड यू पुट दैट? दैट्स माय क्वेश्चन. सर ए लिस्ट दो ना. सॉरी ए लिस्ट चैट में. नहीं समझा. कि ए जो प्रिंट किया है ना आपने, ए जो दिया है ना आपने, वो चैट में डाल. ए कोलैब लिंक ही है ना, क्लिक कर डायरेक्ट मिलेगा. आलसी, कोलैब लिंक है ना रे सबके पास. सही कैरेक्टर है अपने. सर कैन यू रिपीट व्हाट टू डू अगेन? भाई ये एक सेट तेरे पास है, एक लिस्ट है, उसमें से मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच देना है. 11 कितनी बार है, 22 कितनी बार है, 33. बट अब अगर मैं नॉर्मल लिस्ट करूं तो मेरे पास तो रिपीटेशन है ना, मुझे रिपीटेशन नहीं चाहिए.
तो वो करने का एक स्टेप मैं सिखा चुका हूँ कि अगर आप सेट ए लिखोगे और ए सेट बनाओगे तो उसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब इस ए सेट को यूज कर, इस ए को यूज कर और नीचे का लाइन पढ़, यूज ए सेट टू इटरेट एंड ए टू काउंट। अब यहीं पे पूरा कोडिंग है दोस्त। ओके सर। Okay, give it 2 minutes only for this, guys. Now, since we have been discussing quite a long time, so 2 minutes, and then mera bari. Chalo, give it a shot. Give it a clear shot. Okay, my turn. Okay, there are a few answers coming in. That's nice to see. कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया पकड़ा है. Some people actually got how we would work with, but निशाद बहुत अच्छा तरीका है, but गधा मजूरी है. साहिल, smart move. निशाद आप wrong नहीं हो, but when we already have dot count method, काय को मेहनत करता है? You know, जब मैगी 2 मिनट में बन सकता है, तो काय को नॉर्मल नूडल्स बना रहा है? So let's try to work it out, people. Pay attention how I'm gonna play with. People, pay attention to what we are gonna do. तो यही कोड लेके चलते हैं. मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा. For I in A set, नीचे जाओ. Print I, comma, colon, संभल के A dot count of I. That's it. सर इतने में हो जाएगा. देखते हैं चलो. So 33 exists twice, 66 existed once, 99 existed once, 11 existed 5 times, and so on. So sir, बस इतना था. Why do you think मैंने 2 ही मिनट दिए? Clear? अब इसे stage. Is everybody clear with this? Yes, no? People give me thumbs up if clear. Hardly see thumbs up. Say yes in chat so that I understand कितने लोग हैं, मैं गिन रहा हूँ. Come on, be quick. People clear, mention yes in chat so that मैं गिन पाऊँ कितने लोग clear है. और जिन्हें doubt है, it's a good time to ask. Good. I have around 28 odd people saying yes. What about remaining? मेरे पास majority भी नहीं है. We have 60 people roughly on our thing. So at least 30-35 लोग बोले तो मुझे समझे. Come on. Any doubt? Ask. Because इसी question को मैं stage 2 पे लेके जा रहा हूँ. Okay, चलो. वापस बताइए सर, समझ नहीं आया क्या लॉजिक लगा. No issues, Arshad. देखिए एक simple है. Logically देखते हैं. People, pay attention please. Now I'm just explaining the terms.
मैंने क्या किया, मेरे पास एक सेट है, लिस्ट है जिसमें डुप्लीकेट है, इसे सेट में कन्वर्ट करने से ना दोस्त क्या हुआ, तेरे पास सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स आ गए। तो ए सेट में सारे यूनिक एलिमेंट्स है। यहां तक समझा स्टोरी? अब मैंने क्या किया, देख, ए सेट में से एक एक एलिमेंट लिया, ये तो यूनिक एलिमेंट ही होगा। अब जैसे कि 33 होगा, 66 होगा, 99, यानी यूनिक एलिमेंट्स ही होंगे। अब उस यूनिक एलिमेंट को प्रिंट किया, यानी 33, और ए क्या है, तेरा लिस्ट है जिसमें डुप्लीकेट्स है, उसमें मैंने काउंट किया क्या, वो आई जो मेरे को यूनिक सेट में से मिला है। तो मैंने प्रैक्टिकली 33 लिया और ए में 33 कितनी बार है वो गिना, प्रिंट किया। 66 लिया, 66 ए में कितनी बार है वो प्रिंट किया। अब समझा? यस सर। परफेक्ट। अब गाइस द क्वेश्चन ऑन लेवल 2 वुड बी, फाइन, ये तो लिस्ट है, तुमने लिस्ट डाउन किया, अच्छी बात है, बट एज यू कैन सी यार दिस इज नॉट लुकिंग प्रॉपर। 1144 ये का मस्कर ही चल रहा है क्या? व्हाट इफ आई नीड इन अ सॉर्टेड मैनर? तो ये तो सिंपल है, ये तुम लोग को मालूम है, बट नहीं मालूम तो लेट मी पुट इट दिस वे, सिर्फ इतना जादू करोगे तो एक क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। जस्ट चेक इट आउट। समझा क्या किया? सर एक मिनट, मतलब आपने एक सिंपल आइडिया किया, ए सेट तो था, उसको सॉर्टेड किया, मतलब सॉर्टेड लिस्ट मिल गया तुमको, सॉर्टेड लिस्ट मिल गया तुमको, बस उस सॉर्टेड लिस्ट से इज्जत से 11 से 99 सब कुछ आ गया। This is what we are talking about. This is how we are working with. Is everybody clear with this? फंडा समझा सबको? Yes, no, waiting. People? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो, ये पहला। अब आइडिया आना शुरू हो चुका होगा कि भाई when you go for interviews, why sometimes no you say, ये बहुत बार होता है मेरे साथ, lot of students would come and say, sir, सही हुआ है पाइथन सर आपके साथ, या जावा अच्छे से हुआ है, C++ अच्छे से हुआ है, they come back from the interview, सर मैं सबको हंस के बोलता हूँ, learning is one thing, understanding the coding is different. इसीलिए ये questions लाता हूँ, so that you understand the gravity of the situation and मालूम पड़े कि भाई जब इंटरव्यू में जाओगे तभी क्या बैंड बजता है। हम लोग को क्या लगता है मालूम, क्या पूछेगा इंटरव्यू, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आता है, 2-3 मेथड पूछ लेगा, आता है। See, we want to know how clear you. मैं हर बार I often say this in most of the interview rounds or interview preparation, that there is a difference between learning and understanding. अब obvious एक question आता है, sir, what is the difference between learning and understanding? बहुत सिंपल सा चीज है। लर्निंग बोलता है कार में 4 टायर है, अंडरस्टैंडिंग बोलता है 5 है। Is anybody clear what am I talking about? Yes, sir. क्या? Yes, sir. एक्स्ट्रा टायर पंक्चर के लिए रखा होता है। Stephanie. Understanding is understanding Stephanie of programming. Believe me, this makes a hell of a difference. I'm very sure आपने बहुत अलग-अलग चीजों में सीखा होगा, working होगा. With me, I always make it a point to get those things clear जो मुझे मालूम है आगे जाके तकलीफ देने वाला है। जैसे स्टेफनी का अपने को इम्पोर्टेंस नहीं लगता, गलती से किसी जंगल में अगर पंक्चर हो ना, तभी याद आया स्टेफनी बहुत काम कर रही है। इंटरव्यू भी वही है, जब तुम लोग पंक्चर होते हो ना तभी याद आता है, आई अच्छा है वो बोला था। तो इसीलिए लेक्चर्स ध्यान से फॉलो करो, ध्यान से वर्क करो। यहाँ तक सब क्लियर हो? जय क्लियर, रेनू क्लियर, सुजित, राहुल ऑल क्लियर? यस सर। परफेक्ट। चलो कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? क्योंकि अब मैं नेस्टेड लिस्ट में एंटर कर रहा हूँ, व्हिच इज द सेकंड लेवल ऑफ लिस्ट नाउ। इज एवरीबॉडी क्लियर अप टिल नाउ? यस सर। चलो अब बात करते, भैया वापस मेरे प्यारे से स्क्रीन पे आ जाते हैं। So I strongly believe in one thing, रे कितना भी ये वर्चुअलिटी यूज करो, but the best option is when I actually start writing, क्योंकि मेरे पास ये सारी चीजें ना पीपीटी में अवेलेबल है, but somehow I'm always comfortable only when things goes in a normal writing, because I feel उससे शॉर्टकट्स कुछ होता नहीं है। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड स्टूडेंट कि भाई जब भी तुम लोग कोई सीखो ना, वन थिंग, इसलिए मैं हर बैचेस में बोलता हूँ, मेरे इवन इंडस्ट्रियल बैचेस में, जनरली इंडस्ट्री के बैचेस में ना हम लोग नोट्स नहीं लेते, दैट इज हाउ दे आर कि और इंडस्ट्री में मैं अकेला ट्रेनर है जो उन लोग का पहले ही दिन बोल देता है, कीप अ नोटबुक, कीप अ पैड, आई डोंट नो, बट खुद के नोट्स बनाओ। क्यों? कभी भी अगर रिकैप मारना है ना, खुद के लेक्चर्स, खुद के रिकॉर्डिंग से मत मारो, खुद के लिखे हुए नोट से निकालो। So जिस दिन वो कर पाओगे, believe me, you are at a stage where you can understand about. So चलो अब क्या बात करें? We are talking about list inside a list. अब पहला क्वेश्चन है सर ऐसा हो सकता है? हाँ, very much. So if I say A,
10, 11, 12, 13 ये नॉर्मल लिस्ट है, ये 1D। इसको 2D करने के लिए आई कैन राइट वेरी वेल दिस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Now, two things we need to understand. If I ask question, now be careful, तुम लोग को interviews में ये दिया होगा, and now the series of question which I am about to fire would start. देख लो ये, देख लो शांति से, देख लिया सबने? Now you guys would be typing and giving me answer rather than speaking. People would type and give me the answer. Be ready. If I say len of A, what would be answer? Okay, good. People are on dot, that is clear. Q, public गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए भाई लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो अगर मैं len of A कहूँ तो this will only give me 3 because this entire stuff is 0, this entire stuff is 1, this entire stuff is 2. Okay, पहला point. Again, what would happen if I say A of 1? What I would get? Good, good. Hey, 1 बोला ना, ज़्यादा नहीं, 40, 50 आएगा. So 40, 50 is what we get. Super. What I would do if I just want to get 80? टू इंडेक्सिंग आएगा, सर मतलब 2 का 0 1 2 becomes 80. So 2 is the first thing, second is a 2 as a second dimension, and then we'll be able to get it. Like a 2D array. 2D array जो हम लोग ने सालों से यूज किया है, something similar to that, something similar to work with it. Okay, so chalo, good. So now if we intend to play, let's go one step further. It's quite interesting thing to play on. People, मैं वही जो अभी किया वही दे रहा हूँ. सर ये तो 1D है, let's make it 2D. So next thing when you talk about is this. So sir A अगर मैं कहूँ तो obvious है पूरा elements है. Okay. अब A का 2 कहूँ तो सर लास्ट वाला हिस्सा आएगा 60, 70, 80 का. Okay. So सर A का 2 कहूँ तो आएगा elements which would ultimately comes to 80. सर ये आपने बोला वही सब है. Good. Think and answer now. Suppose I want this thing to be printed. How many for loops I would require? My question is very clear. ये interview के questions में पूछ रहा हूँ. How many for loops do you require to get this output? 1 or 2? दो ही option दे रहा हूँ. One. How would you work with just 1? इंटरनली जा रहे हैं ना, नेस्टेड के चाहे इंडेक्सिंग से किया तो आता है. इंडेक्सिंग को प्रिंट सर लेंथ फाइंड करके उससे कंपेयर कर सकते हैं. You take 0th index, 1st index, and 2nd index. Have you thought about this? This is enough. अगर कोई कोड करने बोले तो this is more than sufficient. सर क्या बात कर रहे हो? देख लो, याद रखना.
इंडेक्सिंग का जरूरत भी नहीं है, ऑटो इटरेशन पे पूरा काम हो सकता है. दैट इज अ स्ट्रेंथ व्हिच यू हैव. ओके, दैट इज अ स्ट्रेंथ व्हिच यू हैव. पंडा समझा सबको ये? यस नो वेटिंग. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जरा पॉज लो, सोचो, समझो, बिकॉज नेक्स्ट थिंग आई वांट यू गाइस टू प्लान. आई वांट यू गाइस टू प्रिंट सब लिस्ट 1 has 10, 20, 30. Sub list 2 has 40, 50. Sub list 3 has 60 से लेके जो भी अपना 90 है. ये मुझे इस फॉर्मेट में ही प्रिंट करना है. Go ahead. 5 minutes, not more than that. दिमाग लगाना, क्योंकि यहाँ पे खेल इंडेक्सिंग का होगा. यहाँ पे खेल इंडेक्सिंग का होगा. क्यों मैंने वो कहा, वो आप जानते हो. सुबह सुबह 5 minutes. इंडेक्सिंग का खेल है ये पूरा खेल इंडेक्सिंग का. When I said इंडेक्सिंग का खेल है, थोड़ा दिमाग लगा देना तो उसमें लिख दीजिए. Come on, people. You guys should be able to. Sublist n won't work exactly. Okay, n उसने ऊपर रखा है. Okay, smart move can work in that case. So in my program, it's returning only the index values, not the 0, 1, 2, 0, 1. ऐसे. Because यहाँ पे sublist उठा के एक एक print करना है. तो इसमें वो trick. Just wait. When I start, will explain. तब तक के लिए जरा hold कर.
Good to see people are trying. Okay, my turn. Things would go. Let's see. So, okay, people are pretty on dot in this case. Okay, people going into it. ये तो ठीक है, इसको थोड़ा नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाते हैं. अगर सब लिस्टिंग का बात करना है तो यस, I would take N as most of the people have done. Good job. For sublist in A, नीचे आओ, print से list number if I want. मैंने यहाँ पे sublist 1 has बोला है, तो let's see. I would say sublist N has, this will wind up the part of it. If you want, you can always do plus equal to 1. फिर नीचे जाओ. For element in sublist, print. You will be working with the option of element itself. मैंने जानबूझ के ऐसे variables use किए which would make sense to you guys. So if you see, this is what we wanted. So sublist 1 has 10, 20, 30. Sublist 2 has 40, 50. Sublist 3 has 60, 70, 80, 90 to work into picture. Okay. Now, similar to this, a variation which I want you guys to understand. Again, interview, and this one is from Sybase. इनमें ये पूछा गया था. Be careful. They have given you 5, 1, 3, 8, 10, 1, and okay, that's random numbers. 33, 1, 5. So, क्या करना क्या? The first input which they wanted was 1, 3, 5, 1, 8, 10, and 5, 11, 33. पहला दो series of question है. Then what they wanted was reverse. That is 5, 3, 1, 10, 8, 1, 33, 11, 5. Then they wanted
minute 1, 3, 5, 10, 8, 1, 5, 11, 33, and so on. If you understand, this is ascending, this is descending, this is combination. इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा तुम्हें, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है चेनिंग. तो चेन क्या होता है? अगर मैं इसका सब हिस्सा लूं a of 0, then I'm referring to this, and then a of 0 को मैं सॉर्ट कर सकता हूं. अब लगा दिमाग, एक 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 करके करो. Restart the timer. 5 minutes. 5 minutes for all three. Then I'll discuss again. Reset it. नहीं हुआ. Off, on. हुआ शायद. हुआ. Good to see people are responding pretty quick. ध्यान से चेनिंग मेथड्स का है, यानी कि सब तोड़ो और फिर उसे यूज करो. तो थिंक अबाउट इट. Okay. Descending, ascending, sorted, reverse.
ठीक है, बट ये 3 अलग अलग प्रोग्राम्स में करना पड़ेगा माइंड यू। इसमें सारे असेंडिंग में आएंगे, सारे डिसेंडिंग में। अब इसमें जिगजैग खेलना पड़ेगा, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। अगर ऐसे 4 भी होते हैं तो असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लास्ट 40 सेकंड्स, उसके बाद मैं और एक वेरिएशंस भी दिखाता हूँ इसमें। Okay, my turn. So majority of you have cracked the code, means I understood how and what are we talking about. But again, for few others, let me get you this data. अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें A का, which may have, now just to work with it, I may have 22, 11, 3 working with. Then unsorted in short, basically we talk about 33, 11, 44. We talk about having 66, 22, 4. मैं और एक बढ़ा के दे रहा हूँ, 88, 99 and 22. 4 elements है सर. If we want to work with it for I, or rather for sublist in A, sublist तो मिल गया, प्रिंट करना है बस sublist. फर्क है अगर मुझे डायरेक्ट वर्क करना है तो 2 का क्या मुझे जरूरत पड़ेगा, और कैन आई डू डायरेक्टली दिस. So I have everything sorted, 3, 11, 22, 11, 33, 44, 4, 22, 66 and, और यही चीज मैं वापस यूज कर सकता हूँ. यानी कि 2 फॉर लूप्स का जरूरत है क्या, दैट क्वेश्चन ऑलवेज वुड रिमेन. सो सॉर्टेड, फर्क क्या करना है, रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दो, हो गया. तो एक ही लूप में ये हो सकता है. यू रियली डोंट नीड 2 लूप्स टू वर्क विद, यू रियली डोंट नीड 2 लूप्स टू ऑपरेट ऑन. So as we go further, as we operate further, आगे का क्या बात होगा, कैसे होगा, people, let's try to understand what you will work with. पहला हिस्सा तो हम लोग ने कर दिया, ये sorted है, दूसरा unsorted है. अब अगर मैं बात करूं zigzag का, now here you need to play smart. सर ये तो होगा, that is a normal way. अब ये जो alternate करने का बात है ना, let's take n as let's say 1. और अब जो मेरा पूरा सिस्टम चलेगा, अब जो पूरा लॉजिक चलेगा वुड बी समथिंग लाइक दिस. इफ n इक्वल टू और इफ n mod 2 इक्वल टू 0. सोच समझ के बोलना, मैं सॉर्टेड रखूंगा या आई विल बी वर्किंग विद दिस, ये तुम पे है. ऑल्दो दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग टू प्ले ऑन. सिर्फ क्या होगा, सो अब तुम्हारा जो काम है वो धीरे धीरे चलते जाएगा, और हर बार एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस 22, 11, 33, 11, 33, 44, 66, 22, 4, 22. तो ये zigzag you can actually work with, zigzag you can actually operate with. This makes things bigger. This makes things bigger. So अभी तक I have just given you, I have loved people who have tried multiple loops and work with it. पर तुम लोग एक चीज भूल गए, सबलिस्ट डायरेक्ट ही उठ रहा था, तो we can actually do it in a one loop. So I generally say this, when I have years of coding experience, I always say no code is right or wrong. Coding are good or bad. So अगर तुमने बहुत मेहनत करके भी आउटपुट लाया तो कोड राइट है. But the question then remains the quality, as I say. क्या तुमने मिनिमम एफर्ट डाले या तुमने एकदम मेहनत करके एक एक एलिमेंट, that depends entirely how you put it. The more you practice, the more you will be able to understand and work with it.
Okay, so that is what I would request you guys to precisely do. Now, one more thing which I'm doing is I'd be creating a Google Classroom. I'll be adding you there. So a Google Classroom pehle khada karo, just a minute. You join that. Reason, notes, assignments, interview questions. ये देने लेने से better, I strongly believe in the concept of classroom. So that becomes for me, it's very easy. जो बाकी classrooms में मेरे पास ready है, मैं just उन्हें fire कर देता हूँ. So I monitor also. Towards the end, I would be giving a small assignment sort of a thing which I would like you guys to do, to work with. So assignments तो तुम लोग को मैं आज second half में भेज दूंगा. Tomorrow there is no lecture, but there is a assignment day which I am keeping as such. So come along with me, just see what I'm doing. So it's very simple. Okay, so let's create this. मैं इसका link तुम लोग को भेज रहा हूँ. You guys would be copying that or clicking on the link straight away to join. Just a minute. Google प्यार से ले रहा है. So this is your classroom. See, generally, I'll be very honest. This is how I operate with most of my batches coming in. So these are the batches which currently I'm handling. So I would request you to also follow that thing. लोग को invite code मैं copy कर देता हूँ. People on your Zoom, I'm just sending it across. जो notes मांग रहे हैं और बाकी के चीज मैं सब कुछ यहाँ पे लोड करते जाऊँगा. So for that you will have a access straight away. वहां से तुम लोग चीजें डाउनलोड करके रख सकते हो. So there'll be assignments coming in. There'll be a series of questions. ज्यादा नहीं, तुम लोग के लिए तो मैं 10 ही दे रहा हूँ. एक दिन में 10 कर लो, बड़ी बात है. सर बाद में मैं और एक फाइल भी अपलोड करूंगा which has 150 odd interview questions जो पूछे जाते हैं. Best of luck, because you will be handling right from list to lot of other things. So basic question set है, ऐसे मेरे पास 12 sets है. पहले एक solve कर लो. When you are done, do update me. I'll be giving you others also. So as we go through, धीरे 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 इस पे चीजें release होना शुरू होगा. People click and become a part of this. जिससे कि मैं बाद में जब चीजें share करूँ इस पे, वो डायरेक्टली तुम लोग को दिखना शुरू हो जाए. So do help it down. Similarly, people who are not there Zoom पे जहाँ मोबाइल्स पे होंगे तो शायद मैसेज नहीं दिखते. In that case, help your friends to send them this link on WhatsApp so that they can join it later. So ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसमें पार्ट लेने कि भाई नोट्स, डेटा, प्रेजेंटेशन जो मैं यूज करता हूँ बीच बीच में, ये सारी चीजें मैं वहां पे लोड करते जाऊंगा. So you'll have the complete access to that. Everybody clear with it? Any doubt, any query for the day? सर So वो good news पास्कल is, का ट्रायंगल. अरे हाँ तेरा पास्कल ट्रायंगल ना, रुक. So let's go with that. He has a question of Pascal triangle. Just a minute. इसका अप्रूवल दे देने दे. Okay. So we already have roughly 42 people have joined the classroom already. जो लोग नहीं कर रहे, make it a point that मैं बाकी की चीजें यहाँ पे share करूँगा. So keep it with you guys, keep it with you. So now let us try to operate, let us try to work with, as he had a question of Pascal triangle to work into. First of all, we all know Pascal triangle क्या है, but considering we may not, let me put this very clearly. Pascal triangle शुरू होता है 1 से, and then as we go ahead with it, ये अलग-अलग elements बनाते हैं. So concept कुछ इस तरह से होगा. Now there are different shapes and sizes to work with. One of the option is also 1 1, then 1 2 1. Then यानी कि हर बार जो next element है, it's an addition of things coming in. अगर centroid वाला है यानी कि center alignment वाला है तो 1 1 1 coming into picture, then 1 2 1 coming into picture, then be careful, 1 3 coming into picture followed by 3 again and 1. So every time proper align कर दे दो. This is how things are gonna work with it. So सबसे पहला concept तो यहाँ पे यही समझना है
ये प्लेस कैसे होता है? तो लास्ट स्टेज अगर दिखाओ इसका, तो आई थिंक दैट कम्स विद 4 and 6, sorry 1. So the most important thing to realize is हम लोग यहाँ से वर्क कर रहे हैं, तो जो भी तुम लोग का कॉन्सेप्ट होता है, जो भी तुम लोग का प्लेसमेंट्स होता है, अगर मैं वो बात करूँ तो तुम लोग का स्टोरी शुरू तो होता है भाई पहले कॉलम से जो 0 0 पे आता है, that's how we always place it. फिर जब बात करते हो यहाँ पे कॉलम 1 0 कॉलम, जब बात करते हो दैट इज 1 1. अब ये पब्लिक समझ नहीं पाता कि सर एग्जैक्टली ये क्या कर रहा हूँ, मैं चीजों को तोड़ रहा हूँ रो और कॉलम में. सर क्या क्या, वापस बोलो. रो एंड कॉलम. सो दिस इज रो 0 0 0, रो 1 1, column 0 1, column 1. So similarly we'll be having 2 also. So यहाँ के आने वाले डिजाइन सब कुछ कैसे होंगे? 2 0 2 C 1 2 C 2. That is, पहला तो वो दिमाग में डाल के रखो. So it's basically NCR format as we call it. NCR format to work into picture. अब ये NCR का मेरे दोस्त फॉर्मूला होता है. तो फॉर्मूला ऑफ NCR is given by, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो people tend to forget. The basic idea is an NCR formula which says n factorial. Right, so n you would be providing in this case n minus r का factorial. तो इसके लिए तुम लोग को factorial work करना पड़ेगा and r factorial. That is how we work into picture. That is how we work into picture. तो सर करना क्या? टेक्निकली स्पीकिंग तुम लोग को यूजर से n लेना है. तो अगर तुम लोग को 1 2 3 4 5 प्ले करना है तो तुम्हारा n 5 का होगा. फाइन. तुम लोग को करना क्या? सबसे पहले तो तुम लोग को स्पेस प्रिंटिंग का होगा. तो दिस कैलकुलेशन हैज टू बी डन इन टर्म्स ऑफ इट एंड देन इट इज वेरी सिंपल. तुम लोग को हर जगह पे ये फॉर्मूला ही प्रिंट करना है. हर जगह पे फॉर्मूला ही प्रिंट करना है. तो करेगा कैसे? ये फॉर्मूला लिख के रखा. ये फॉर्मूला बहुत काम का है. दिस इज द बेसिक मीन्स. पीपल विल टेंड टू, मजा क्या आता मालूम, पब्लिक ये देख के ना, पैटर्न प्रिंटिंग. पैटर्न प्रिंटिंग इज ओनली ओवर हियर. बाकी का सारे एलिमेंट्स पैटर्न के थ्रू नहीं आ रहे, ये फॉर्मूला के थ्रू आ रहा है. जहाँ एन आप बोल रहे हो और रो आपके हाथ में, एन आप बोल रहे हो, रो आपके हाथ में है. ओके. So just for the basic working very quickly, just to see how well or how bad we can produce this. चलो मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ. या गो अहेड. सर ये तो जीपी का फॉर्मूला है ना, n factorial upon ap gp का. जरा 5 मिनट रुक जाना. we'll go with it, don't worry. कोलैब पर दिखाइए. कॉम्बिनेशन वाला कॉम्बिनेशन. रुक जा दोस्त, डोंट वरी. मैं चलो वरना इसी शीट में मैं ये लिख देता हूँ. सो तुम लोग को भी वो एक्सेस तो मिल जाएगा डायरेक्टली. सो पीपल विथ मी, मैं पार्शियल दिखा रहा हूँ, पूरा दिखाना मजा नहीं आएगा. तो व्हाट आई एम डूइंग, कंसीडर n इज इक्वल टू 5. पहले 5 टर्म्स के लिए मैं ले लेता हूँ. फॉर नाउ मुझे क्या करना है, यही फॉर्मूला बार बार तो रखना है सर, और क्या करोगे आप? या गो अहेड. मेरे दोस्त क्या हुआ? I just checked my हाँ. I'm extremely sorry, voice is cracking. Guys, मेरा प्रॉब्लम है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा. किसी को सुनाई नहीं दे रहा. किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा कहीं. दोस्त टाइप कर दो. माइक के बाद में वापस चेक कर स्पीकर सिस्टम. वॉल्यूम इज वेरी लो, हार्डली एबल, वरना मेरे एयरपॉड्स ला के दे बाद में. अभी चलो. सो नाउ एज वी वर टॉकिंग अबाउट, हम लोग भैया ये काम कर रहे थे. फिर मैंने कहा था अमर, प्रिंट के नाम पे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? तो फैक्टोरियल इज अगेन एंड अगेन व्हाट वी विल बी प्रिंटिंग. तो if we intend to work with math dot नाम का एक फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल होता है. इफ यू वांट टू यूज मैथमेटिकल फॉर्मूला, माइंड यू, इसको एक स्टेप थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा. जस्ट अ मिनट. सर क्या था? मैथ एक फीचर है तुम्हारे पास,
तो इफ यू से डॉट, बहुत सारी चीज है तुम्हारे हाथ में आ जाती है, बहुत सारे फंक्शनैलिटी तुम्हारे पास आ जाते हैं, तो इट्स अ फैक्टोरियल का स्ट्रेट अवे इसमें कॉल है। ये आगे मैं सिखाऊंगा जब I'll go with a data science का part, that is Panda and all, but अभी since he had a question, so I'm just putting it in. So n factorial, तो n दो, followed by division है, bracket है, bracket में again math dot factorial का फंडा चलेगा। My screen is shared, right? मालूम पड़ा मैं अकेले की बड़बड़ कर रहा हूँ। People, screen shared है, right? Yes, sir. Yes, sir. So factorial of n minus row number, whichever I am at, into again math dot factorial to work into. अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अगेन एंड अगेन से, people tend to go for something which is no pattern based printing. It's a formula based printing to be very precise. तो अगर मैं जस्ट ये इतना प्ले करूं, मैंने ज्यादा कुछ काम नहीं किया, तो यू गेट 5 10 10 5 1, तो ये तो एक रो का मैंने बात किया। अब ये तुम लोग को हर बार अलग अलग रेंज में खेलना है। अब इसके साथ जब तुम लोग ऑपरेट करना शुरू करोगे, तुम लोग को अब सिर्फ उसे प्लेस करना है प्रॉपरली। आई रिपीट, मैंने से तुमको ये फॉर्मूला ला के दिया, अब जिस भी रो का बात करोगे उस रो में तुम लोग को अलग अलग डेटा मिलेगा। तो अब इस फॉर्मूला को रो प्रिंटिंग के साथ नेस्टेड फॉर लूप में डालो, आंसर मिलना चाहिए। यू शुड बी एबल टू डू दिस ना। फर्क है, प्रॉब्लम पब्लिक पैटर्न समझ रहा है, फॉर्मूला ये है। ये अगर समझ गया तो तुम्हारा काम हो गया। गिव इट अ ट्राई, नेक्स्ट टाइम डू लेट मी नो कि किया कि नहीं, वरना मैं पूरा कोड भी दे दूंगा। ओके ओके सर। चलो, so see you on Monday now. Monday morning I'll be starting at 8 instead of 8:30. I'm sorry, but Monday being a busier day for me, I have a couple of meetings coming in, so I don't want to compromise on hours. So we'll be meeting at 8 instead of 8:30. So Monday morning होगा। सर कल आ रहा, हाँ रे, ज्यादा नहीं, 15 असाइनमेंट के क्वेश्चन खत्म करो और सबमिट करो। So you have the entire 2 days of leverage, आराम करो। मैं दोपहर तक क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, जैसे ही अपलोड हो गूगल क्लासरूम आ जाएगा। गूगल क्लासरूम विल हैव अ डेडलाइन फॉर संडे नाइट 12 o'clock। उसके बाद खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। जो मैं तुम लोग को इंटरनल असेसमेंट देता हूँ, दैट इज ऑन बेसिस ऑफ दिस असाइनमेंट्स। सो गिव इट अ ट्राई। कोड कॉपी करने का ट्राई करना भी मत, बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग, मेरे बैक एंड पे पार्सर्स चलते हैं। तो जो भी तुम लोग कोड करते हो, मैं पार्सर को देता हूँ, तो वहां से अगर कॉपी रहा तो इमीडिएटली हम लोग को मालूम पड़ जाता है। बट ट्राई टू गिव इट योर ओन कोड। ओके, दैट डजंट मीन सर मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, मैं स्मार्ट है, ठीक है, बट ट्राई टू वर्क इट प्रिसाइजली। खुद ट्राई करो, डिस्कस अमॉन्ग द ग्रुप हाउ टू सॉल्व, जैसे सुबह तुम लोग का होता रहता है। आई लव दैट पर्टिकुलर पार्ट। ट्राई नॉट टू कॉपी, बिकॉज अल्टीमेटली हर एक क्वेश्चन ना तुम लोग को गूगल पे मिल जाए, बट देन अगर गूगल करके आंसर देना, इंटरव्यू में क्या बोलेगा, सर 1 मिनट गूगल कर रहा है, 2 मिनट दो, मैं भी आंसर देता है। सो यू नॉट गोना डू, so try to do it on your own. Okay, sure guys, have a wonderful weekend and assignment as I said दोपहर तक मैं अपलोड कर देता हूँ। बाय गाइस। थैंक यू सर। Thank you, sir.